Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. It is my great pleasure to welcome you all to today's virtual summit organized in observance of May as Hepatitis Awareness Month, a time dedicated to raising awareness, promoting prevention, and encouraging early diagnosis and treatment of hepatitis. We are truly honored by the presence of distinguished guests, respected faculty members, healthcare professionals, and students from across Pakistan. I am Dr. Saman Sultan, serving as the Assistant Director at Pride. With a background in dental surgery and academic teaching, I'm committed to supporting initiatives that elevate the standards of dental education and public health awareness. Today's virtual summit is dedicated to a vital cause. May is globally recognized Hepatitis Awareness Month. Hepatitis and inflammation of the liver remains a major global health concern affecting millions of individuals, often without their knowledge. Many forms, particularly hepatitis B and C, can remain silent for years, leading to serious complications such as liver cirrhosis and liver cancer if left untreated. What is often less recognized, however, is the important intersection between hepatitis and oral health. Hepatitis B and C can have significant implications for dental care settings where transmission risk must be carefully managed through strict infection control protocols. Moreover, individuals living with hepatitis may present with oral manifestations such as lichen planus, xerostomia, and delayed healing, making dental professionals key players in early detection and overall patient care. There are several types of hepatitis A, B, C, D, and E, each with different routes of transmission. Poor sanitation, contaminated water or food, unsafe medical or dental procedures, intravenous drug use, and unprotected sex are among the key risk factors. Fortunately, preventive measures such as vaccination, especially for hepatitis B, improved hygiene practices, routine screening, and patient education can dramatically reduce transmission and improve health outcomes. In this context, today's virtual summit aims to highlight the broader health implication of hepatitis while also emphasizing its relevance to oral and dental professionals. Through expert talks, clinical insights, and evidence based discussions, we hope to foster greater understanding among healthcare providers, students, and the wider community about the importance of integrated care, early diagnosis, and prevention strategies. Together, we can work towards eliminating hepatitis as a public health threat while reinforcing the essential role of oral health in systemic well-being. Allow me to begin by introducing the institution that has brought us all together, PRIDE, the Pakistan Research Institute of Dental Education. PRIDE is an academic and research platform committed to uniting the dental education community, expanding opportunities for students, and fostering a culture of collaborative research. Our mission is to educate, empower, and engage future researchers by providing accessible research slots, expert led mentorship, and free publication opportunities through partnerships with reputable journals. Pride has successfully conducted several insightful webinars in the past, graciously presided over by dedicated hosts, and honored by the presence of respected and esteemed guest speakers. Pride is proudly led by a team of passionate directors and campus ambassadors who voluntarily contribute their time and expertise to academic excellence and research advancement across the country. Similarly, the Oral Head and Neck Cancer Awareness Symposium held in April was a remarkable success, bringing together leading experts, healthcare professionals, and students and researchers from across the country. The event provided a valuable platform for knowledge exchange, early detection strategies, and multidisciplinary collaboration aimed at improving patient outcomes. We are deeply grateful for the overwhelming participation and positive feedback received. Special appreciation goes to Pride and team for its exceptional leadership, dedication, and organizational excellence in making this awareness initiative impactful and far-reaching. At the heart of this initiative is Dr. Farooq, the founder and director of Pride, graduated from Margla Institute of Health Sciences in 2021 with a degree in Bachelor of Dental Surgery, earning a distinction in oral medicine. Driven by a passion for teaching and academic mentorship,
Dr. Farouk also runs a successful YouTube channel, Experience Dentistry, which has over 5,000 subscribers and has mentored and guided numerous dental students across Pakistan. Currently, over 25 research proposals are being supervised by Dr. Farouk through the Pride platform. He has two research papers published in national journals and one international publication co-authored with Dr. Anas titled Non-Invasive Treatment of Early Childhood Caries. His leadership, vision, and dedication to dental education continue to inspire the community. So, without further delay, I would request my dear colleague, Dr. Ghazala Naveed, Managing Director at Pride, to further continue the session. Dr. Ghazala, please do the honors. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Ghazala Naveed. I'm the Managing Director at Pride, and it is my esteemed pleasure to extend a warm welcome to Dr. Muhammad Adil, a distinguished academician and practitioner who will be sharing his expertise at the Hepatitis Summit on Pride's platform. As the Associate Professor and Head of Oral Medicine and Diagnostics at Islam Dental College, Dr. Adil has established himself as a leading authority in his field. His impressive array of qualifications, including a Bachelor's of Dental Surgery, membership of College of Physicians and Surgeons in Oral Surgery, Fellow of the International College of Dentists, and certifications in medical teaching and medical editing, underscores his commitment to academic excellence and professional development. Notably, Dr. Adil's role as Clinical Secretary of the Pakistan Dental Association Sialkot highlights his dedication to fostering collaboration and innovation in dental education and practice within Pakistan. As a respected expert in oral medicine and diagnostics, Dr. Adil will deliver a compelling presentation on hepatitis prevention and management in dental practice, a topic that resonates deeply with dental professionals worldwide. We eagerly anticipate his insightful contributions, which promise to enrich our understanding of this critical area and inform best practices in hepatitis prevention and management within dental settings. So, without further ado, I invite Dr. Adil for his presentation. Dr. Adil? Okay, guys, we're waiting for him. It will just take him like 5 minutes. एक्सक्यूज मी एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज़ आ रही है? Walaikum salam. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. ओके, सॉरी फॉर बीइंग लेट। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, इसलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर अदील
and I'm Associate Professor of Oral Medicine. And I welcome all of you on this virtual summit on a very key topic that is hepatitis. And this is a much awaited topic on which we should, all should talk and we all should work on it so that our community should get free of this mini epidemic. Ladies and gentlemen, let's begin with uh, the introduction first. We all know this hepatitis is basically a disease which is concerning globally, and it has become a silent epidemic that I must say, because not only the developing countries but also the countries that are developed, they also have the patients with this problem. Uh, as we all know from our core knowledge, this hepatitis is basically a disease which is associated with one of the major organ of our body, that is liver, and it is mostly a viral one. Okay, there is one query that we should have a wait for 15 minutes because of namaz. Should we, Dr. Ghazala? Sir, you may continue. Okay. I was talking about one of the important organ, that was liver. And we all know that liver perform different important functions in our body, just like metabolism of various products, but also associated with detoxification. And one of the most important aspect is the coagulation. In dentistry, we are more linked with this coagulation one. Previous slide over the. Okay. If we just consider that why it is associated with dentistry and why we should talk about it, because we all know that hepatitis has routes of spread through blood and through saliva and through the aerosols which are continuously produced in our clinics or in our environment. So we are the one who are at a very high risk for getting this disease. So we all should work together to provide somewhat level of awareness, not only to the community, but also to our dental healthcare professionals, so that they can make sure a proper infection control settings in their clinics or in the hospitals in order to avoid the transmission of this disease. Next slide, please. Next. Okay. If we just look at the types of viral hepatitis, so we have different types. Like we have hepatitis A virus, B virus, C virus, hepatitis D, E, and up to hepatitis G as well. Hepatitis A virus and hepatitis E virus, they both have fecal oral route, which means that contamination can occur due to poor hygiene. But hepatitis A virus, it generally get resolved without any possible sequel. And similarly, hepatitis E virus also get resolved without causing any significant damage or does not involve in producing any chronic infection. But in dentistry, there are two types of hepatitis B viruses which are significantly associated. One of them is hepatitis B because it has a blood-borne route and it is also associated with production of a chronic liver disease, just like liver cirrhosis as well, and also hepatocellular carcinoma even. Similarly, hepatitis C virus, which is also spread through blood, and it mostly remains asymptomatic, but it's chronic in nature, and it can produce a long-lasting damage to your liver as well. And we all know in dentistry, whenever we work regarding surgery or regarding perio procedures, there are a lot of bloody fields, and there's huge risk that we can get ourselves contaminated with the blood transmission or blood aerosols, so we can easily get these problems like hepatitis B or C viruses. Next. Okay, what are the risks that dental professionals have in their operatory settings or in the clinical settings? The first one is that they can get easily exposed through the blood. As I have discussed, that hepatitis B and C, they both can easily get transmitted through the blood. So we all have or we all do such procedures in which we are in close contact with the blood. So they can easily get transmitted to us as well. Similarly, saliva, which is spread all over the oral cavity, it also carries these viruses, so it can get easily transmitted as well.
plus the aerosols which are produced whenever we communicate with the patients or whenever we do procedures just like scaling, in which aerosols or droplets are basically formed. So these are the ways by which we are extremely closely associated with this virus, and it can be easily transmitted to us. Uh, as I discussed, that we are majorly concerned with two varieties, hepatitis B and C. According to the data of different indexes, hepatitis B virus has the highest occupational hazard to the dentist. And the reason being, the patients who are coming us to the perio problems or who have very poor oral hygiene, they are the one who are at a greatest risk, not only to the other patients, but also to the doctors as well. Similarly, for these periodontal problems, we are doing procedures like scalings and root plannings, and these devices which are utilized for these purposes, they produce different aerosols which are spreaded in our environment, and they can easily contaminate it, and they can become the source of easy transmission of this virus to the dentist. Next, please. Okay. Uh, what should be done in the dental clinics in order to prevent ourselves? That is very important. First one is the immunization program. Uh, as I have recalled when I was in third year BDS and I started doing clinics, the first thing that our teachers asked that whether you are immunized or not. And if you people are not immunized, get yourself immunized first. Till now, I ask my students as well, and I also want that we all should take care of our immunization, because hepatitis B virus carries a significant control through this vaccination program as compared to the hepatitis C. So we all should get properly vaccinated. Not only ourselves, we should get vaccinated, but also the staff that is working on our clinics, including our auxiliaries, and they also should get proper immunization, and this is very important as well. We should like mostly utilized vaccine is the Angenex B, and it has a protocol that how would you use it. There are two ways by which we can utilize it. One is 013 program, which have a booster dose after a 5 years, and second one is the 011 program, which has a booster dose after a 1 year. So if anybody at the clinic, whether a doctor or whether the other dental healthcare professionals that work our clinic, they're not immunized, so this should be done at the priority. Plus, we should take a proper record as well, who is immunized and who is not immunized. We can kindly maintain that record, and so that it can help you to memorize that when you need a booster or when you do not. Similarly, in addition to immunization program, we can also make sure that we can use maximum personal protective equipments. And these PPEs include your gloves, your masks, your gowns. Uh, Further equipment can also be added like eye covers, like face shields. These are the different type of personal protective equipments that should be introduced in the clinics at a proper value, so that not only ourselves but also our staff should be protected from this issue. We should use double gloves, or we should use better quality of gloves in order to avoid the gloves needles injuries, and we should wear properly gowns, so that or we should properly wear masks, even if we can use double masks as well to avoid this aerosol contamination. So this is important. Mostly I have seen that doctors are taking care of these PPEs, but the associated auxiliaries or our dental staff, they are not taking good care of themselves. So we should make sure that they should also wear proper gloves, masks, as well as gowns in order to avoid contamination. Then we should utilize better sterilization techniques, better autoclaving techniques, whether it is steam autoclaving or whether it is your vacuum autoclaving. So whatever you are going to use, you should properly sterilize the instruments at a proper given standards in order to avoid contamination across the patients and by ourselves as well. Similarly, we can use the maximum amount of barriers, different type of barrier tapes are available in the markets that should be utilized or should be applied in those areas of the dental units, which are basically we are touching it, and such type of barriers should be utilized. And after doing patients, we should properly discard it as well.
Moreover, some of the data that suggests that if we introduce chlorhexidine rinses, there are certain articles which are published regarding this matter, and they say that if we utilize chlorhexidine rinses before doing procedures, chlorhexidine has antibacterial properties, so it basically reduces the content of these microbial uh, flora within the oral cavity. And so it is much better that we should make our patient rinsing before doing some procedures. Next. Okay. So what type of exposures we can have at a clinic? Like number one, we can have injuries percutaneous, and this is the most common type of injury that we get. That is your needle stick injury. Uh, Almost, I think every dentist has got at some point little bit, or we should take proper care of that. Similarly, we can have our contact with some infected fluids or the infected mucosa of the patients. These are one of the greatest risk exposures at a clinic. Similarly, what should we do if we get these type of exposures? First, we should do immediate washing, and then we should report it and document it and evaluate it, that how it has happened and how we can prevent it, and follow the given prophylaxis in order to avoid these type of cutaneous injuries, so that we should avoid these type of infections. Okay, Uh, next. s- Gayatri, you've been removed from the group for doing this to the screen, okay? So should I move to the next slide? GG. Okay, there are certain guidelines which are given, which we should follow regarding the treatment of the patients who have hepatitis. We cannot say no to those patients who have hepatitis. We should take proper protocols so that we do not transmit this disease to us or to the other patients as well. Because cross contamination can occur from patient to patient, from patient to doctor, and from doctor to doctor even as well. So there are different routes for cross contamination. So we should use given guidelines to avoid the transmission of these type of infections. Number one, we should avoid elective treatment whenever the patient is in during the active phase of hepatitis. We can delay that, like if a patient is requiring some sort of whitening procedures, which are quietly elective. So we can delay that. Once your infection got settled down, you can check it by doing ELISAs or PCRs, and then maybe when the viral load get reduced, you can do that procedure safely. Similarly, you can consult the physician for the past infections, that patient is having some other sort of infections as well or not. You should use proper barriers, as I have told you. Uh, and similarly, you should do something to minimize aerosol productions. Okay, by preventing, how we can use face shields so that we should not be properly exposed to those aerosols. Similarly, we can use scoop up techniques in which we can single-handedly recap the needles. I have seen mostly beginners, or we can say some persons who use two hands to cap the needles. So in doing so, this needle got stuck to their fingers. And as I told you, in dentistry, one of the most prevalent reason for the transmission of hepatitis is the needle stick injury. So in order to avoid it, there is one commonly applied technique which is called scoop up technique, in which you just scoop up the cover of the needle by single hand. This is the way by which you can prevent the needle stick injury. Similarly, you should do not contact the shafts directly with your hand. You should use certain instruments to remove the shafts place. Like for example, if we have a blade on the scalpel, we can use some artery clip or some needle holder to remove that blade rather than putting it out with our hands. Because these shafts are utilized to cut the mucosa or some other things which carry blood on them. So there is a huge chance that bloodborne diseases can be transmitted. Similarly, we should have maintained a proper system for the disposal of needles or sharp instruments. There are needle cutters that are available. You can attach the needle kindly the needle using needle cutter so that it can be properly disposed of. Similarly, sharp instruments can also be
easily removed and wrapped up so that it cannot cut the other person's hands or your auxiliary hands. Similarly, we can use verbal announcements when we are passing the shops, like you have seen in different type of plays that whenever they need something like sharp, they say, give me the scalpel. So everybody around you get alert. So it is one of the way in which you can make your colleagues alert that I am taking some sharp object, and you should be aware that it can damage if we ignore it. Next. Another way is basically by following the WHO guided protocols, and which basically says which are the universal precautions. And it basically says that you have to consider each and every patient positive for the infection, whether that patient is positive or not. In this way, you can make sure that you have used proper protective equipments, you have used proper barriers, you have taken care of all the sharp objects in order to avoid the transmission of infections. Plus, WHO has also given us specific protocols for hand wash, and these hand washing techniques has also been applied to minimize the risk transmission of these in addition to hepatitis as well. Plus, whenever if we get an injury by a sharp object on a wound, we should initially flush it. Similarly, sometimes we get some splash while doing, especially scaling, and it got entered into our eyes. So we should immediately stop the procedure, and we should flush our eyes beneath the water so that the, the protocol should be followed. Similarly, we should test the person, both the doctors as well as the patient, to maintain the data that who is positive or who is not, because not only every time the patient is positive, doctor can also be positive person as well. And we should maintain a proper follow-up, and we should provide proper counseling to our patients. Next. Okay. I would like to say that everybody knows about the basics of hepatitis, that how it is transmitted, what are the causes of it, and how uh, we have to follow certain steps in order to avoid it. So I just want to make sure that people should talk about it, and not only on a specific days, but also in routine boundaries, so that we can get rid of it. Because this is considered to be one of the most commonest infection that is transmitted across the dental field. And this is all because of not getting proper personal protective equipments, do not maintaining proper immunization programs, and do not getting into the debate of how it is transmitted. Denial is not the solution. Dentist, he should treat every patient, as I told you, as a potentially infectious patient. In that way, you can avoid the transmission of these diseases. But selection, that if we select that some patients are positive and some patients are not, without getting a proper data, that can be one of the reasons that we can transmit the infections. We should emphasize on the vaccination program. Currently, it's also run at the government level as well at a very early age. But if somebody is not vaccinated, so it's very simple. You can just check yourself. If you are negative for hepatitis B, just get your vaccination. And if you get 3 doses after every 1 month, and then you get your body or antibody level checked after 1 year and get the booster dose. And if you have used the 016 program, then you should get checked your antibodies after 5 years and get the booster dose as well. Mostly, I have seen that people get these vaccinations, but they do not get these boosters, which means that you do not have adequate amount of protection against viruses, is hepatitis. So whenever you have got the vaccination, kindly regulate yourself according to the booster program. That's all. Thank you. Thank Any you so question? much, Dr. Adil. It was a very insightful session. And we have a few questions for you in the chat box. So there are a few who are praising your uh, way of presentation. They're appreciating.
Dr. Thank Adil you. has written a much needed virtual seminar, especially for new dental practitioners who can take new measures to prevent spread of lethal diseases. Then we have Dr. Ahmed has asked, what are the most common mistakes or lapses you've observed in infection control practices in dental clinics? Like, what are the most common mistakes that you have observed in infection control practices in clinics? The first one is that improper history. Most of the dentists, even including I myself, खुद को भी include कर लूंगा. Sometime we just forgot that we have taken the history of hepatitis or not. Second is the lie that is told by the patient because he knows if you say I'm hepatitis positive, the doctor can get ये test करा लो, वो test करा लो, तो वो भी अक्सर झूठ होता है. So the first lapse that I have observed is at the level of both the doctor and both the patient. Less on the end of the doctor because our students as well and our healthcare professionals are much trained to ask about it and they take good care of that. But on the patient end, I have mostly seen lack of awareness is can be most of I say it's the reason that they are not providing the proper history. So that is the first labs that we have seen. And then we have the investment on the personal protective equipment. The more we invest on personal protective equipment, the better it is for you. The lesser you invest on PPEs, it's not good for you because the patient is one and you are the only one who have to deal with many of the persons in the community. So if you got positive, you will transmit to many of the persons. Patient तो एक है वो आगे चले जाएगा, ठीक है? So you have to take good care of your PPEs. This is the second labs. Then this test somebody was writing is मैं तो वो test करवाता हूँ सबका. It's good, okay, but most of the patients they do not have those finances, okay, and we should check it You're right. or we should try to make some setup at our clinics. Although it's not very expensive, it's cheap, but even then we do not have mostly at very professional clinics. They do not have, even I do not have. Okay, so I must say कि this is the another story because according to PMDC वो तो कहती है कि हर किसी को आप स्क्रीन करो, ठीक है. आपका ये जो WHO प्रोटोकॉल है वो भी यही कहता है कि आप हर पेशेंट को स्क्रीन करो. तो हम जब स्क्रीनिंग के लिए उसको कहेंगे तो या तो अपने पास फैसिलिटी हो तो स्क्रीन हो जाएगा. जब हम उसको भेजेंगे तो कोई तो वापस आता है, कोई वापस नहीं भी आता, ठीक है. और प्लस उसके ऊपर एक एडिशनल कॉस्ट भी आती Correct. है. भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आई डो नॉट थिंक वो करवा पाते हैं. तो ये बहुत सारे छोटे छोटे लैप्सेस हैं जो शुरू से ही हमें आने शुरू हो जाते हैं. अभी तो हमने ट्रीटमेंट्स नहीं किया है, ठीक है. तो बाकी फिर ट्रीटमेंट्स के ऊपर लैप्सेस जो आते हैं वो हमारा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है और उसके अलावा हमारा जो स्किल है उसका लैक है. और बहुत सारे इस तरह के एंगल्स आ सकते हैं. थैंक यू. Sir, very rightly so. Most of the patients जो है वो history proper नहीं देते हैं. सबसे पहले और लैब की कुछ now हिस्ट्री. Dr. Amna Ashraf is asking. Yes, sir. So Dr. Amna Ashraf, she's asking, do you believe hepatitis awareness is adequately emphasized in dental education, or is there still a gap that needs to be addressed? On a community setting there is a huge gap. But on a subject level, it's properly taught. Because not only myself, which is teaching, but I guess rightly from the second year, whenever we have the community dentistry up to the final year, every subject is asked, is telling about this. But yes, up to the level of the patients, whether it is transmitting the information or not, it's not appropriate. I think so. The reason being because there are no adequate community programs which are run at school levels or university levels to educate them. And if we have those programs, they're not properly highlighted. So there's a huge gap between the patients and the doctors and regarding this disease. And there are raw myths as well. Agreed, sir. So Dr. Adil, yes, sir. So Dr. Adil is asking, sir, I do screening of patients before any surgical procedures, particularly extraction of tooth. If a patient comes with positive test, what should I do? Should I continue extraction? But test is positive of the patient.
You can just go with proper precautions. You just have to use some disposable instruments. You can also ask for separate instruments of those patients. You can also maintain a separate bank for those instruments for those patients. You must use double gloves, and while using double gloves, use large size gloves beneath and small size gloves on the large size gloves. You can use double mask. You can use eye covers. You can use gowns. And later on, when you have done the procedure, you should not give those medications which are properly metabolized within the liver. Uh, you can use simply Amoxicillin and Panadol. That's how you can manage your patient. Yes, sir. We have a few praises for you. Dr. Ahmed wrote clear, practical, and eye-opening. Thank you, sir, for sharing your expertise. Then Welcome. Dr. Muntaha Rana, she said, thank you so much, Sir Adil, for the insightful and informative presentation. It was clear, engaging, and very well presented. Then Dr. Thank you. Tuba, Dr. Muhammad Farooq, Amina Sohail, Dr. Tabir Shahid, Hushi Bai, Dr. Tuba Farhan, Dr. Mukaddas, they're all praising your lecture. Then Dr. Mukaddas Naeem, she's asked, how do you manage cross contamination between patients during dental procedures? Cross contamination between patients to patients or two patients to Yes, doctor. sir. Between two patients. Patients to patients. One of the protocol should be that if you have treated a patient who is hepatitis positive, you should have used all the disposable items with proper protective equipment. Before going to the next patient, you have to properly disinfect your unit. You have to change all the barriers. You have to replace all the instruments, and then you can proceed. Plus, I have maintained separate instruments for hepatitis patients. And in order to make sure that whether they are properly with hepatitis or not, I do screen them and ask for screening. And the easiest way is that you can ask the patient to get the instruments for themselves. Because later on life में भी अगर उनको अपने को करवाना पड़े तो अपने ही instruments का इस्तेमाल करें. That's how you can avoid little bit on your end. Okay, sir. Thank you so much, Dr. Yash Kumar, Dr. Naveed, Dr. Amen, Dr. Sarosh. They have praises for you. Dr. Sarosh wrote very informative session, sir. Thanks for Thank, providing a safe guideline, Dr. Adil. Okay. So, sir, thank you. I think we have our next presenter with us. Thank you so much, Dr. Adil. Thank you, It everyone. was a very insightful and very well presented presentation, and we appreciate your knowledge. Thank you so much. And we'll move to the next. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, I think sir, we for have the Dr. insightful Nazam session. with us. Yes, Dr. Nazam is here. Assalamu alaikum, everyone. I am Dr. Tuba Osman, Associate Director, Pride. Let's welcome Dr. Nazam Baloch. Dr. Nazam Baloch holds a BDS degree, fellowship in medical laser, and master's in stem cell and regenerative medicine from Chester Medical School. He has authored 3 publications, is the founder of a STEM company, while also actively pursuing independent research work. Let's give him a warm virtual welcome. Dr. Nizam Baloch, thank you for joining us today. You're on. I'll now hand it over to you quickly to share your insights and expertise. Thank you. वालेकुम सलाम थैंक यू मेरी आवाज सही आ रही है हेलो जी, जी सर आ रही है। कंटिन्यू प्लीज़। अच्छा आई हैव शेयर्ड सम पिक्चर्स क्या वो दिख रही हैं जी, एब्सोल्युटली। okay so I'm going to be talking about oral manifestations of hepatitis C और इसे स्टार्ट करने से पहले one of my professor used to say that the eye does not see what the mind does not know तो अगर आपको एक चीज पता भी नहीं है वो आपके सामने भी है तो यू विल नेवर बी एबल टू डायग्नोज इट या आपको पता नहीं होगा इसका रूट कॉज क्या है तो और सबसे कॉमन ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेपेटाइटिस सी दैट्स lichen planus Sjogren syndrome sialadenitis and some form of oral cancer that is very rare but it does occur uh, तो अगर आप एक कंप्लीट माउथ एग्जामिनेशन कर रहे हैं ओरल एग्जामिनेशन में
if a patient is saying मेरे इस दांत में caries है, I just want to get this checked. So you don't just have to focus on that. आपने full mouth evaluation फिर भी करनी है. You have to check the palate, you have to check under the tongue, you have to check the gums and everything else in the mouth. Because hepatitis C में जो फ्रेनम होता है, lingual frenum, you can see yellowing on it. ये सबसे पहला साइन होता है. अगर वो थोड़ा एडवांस हो चुका है, you will be able to see petechiae purpurae on the palate, especially soft palate. ठीक है. और इन patients में, if you maybe just touch the dental mirror, you'll be able to see slight bleeding from the gingiva. हमारा जो clotting factor है hepatitis C में compromise हो जाता है, and that is the reason here. तो अगर आपको petechiae purpurae नहीं दिख रहे, there you might be able to see lichen planus. Okay. OLP and hepatitis. Okay. When I was in final year, oral medicine ke rotation mein, it was my first patient, and we used to do it in pairs. A patient came and she had like white streaks on her cheek, and the person who was with me, she was confused. What could it be? And even one of the seniors was there, and they were confused. While taking the history, she did mention uska liver ka masla tha. And that's when I connected कि oh, it could be oral lichen planus. तो अगर आपको पता है कि क्या चीज किससे associated है, when does it show up, you know the root cause, you'll be able to diagnose in a better way. तो oral lichen planus, especially the erosive ulcerative one, it does occur hepatitis C के cases में. तो अगर आप lichen planus देख रहे हैं, you don't have to just treat the lichen planus, you have to find the root cause of it. आप उनकी हिस्ट्री लेंगे तो आपको आइडिया होगा. Okay. And next we have the salivary gland disorders and hepatitis. इसमें hepatitis के patient में the pathophysiology of it, the dryness of glands is still not well known, but इसमें हमें xerostomia भी देखने को मिलता है. और अगर xerostomia होगा तो it is quite obvious कि dental decay भी होगा. There is nothing to flush out the bacteria, pH maintain करने के लिए नहीं है. और obviously अगर xerostomia है तो halitosis भी होगा. So these things they like come together. इनमें से कोई दो फैक्टर्स भी हैं, you need to ask them about their liver condition. और अगर उनको नहीं आइडिया, you have to check the frenum, क्या वहाँ कोई yellowing है, क्या आपको कोई और साइन दिख रहा है, do you see lichen planus, do you see petechiae. अगर इनमें से कुछ भी दिख जाता है, it's better that you also refer them to the medical section, और उनका liver भी evaluate होना चाहिए, because आप उस root cause को जब तक treat नहीं करे, there is no point in treating the dental decay or halitosis or anything else. और जब prolonged हो जाती है ये dryness, तो it also leads to sialadenitis. Okay. Hepatitis and hepatitis C and diabetes. So hepatitis C and diabetes also go hand in hand. It like may act as an independent diabetogenic factor. Like they have a really important association, hepatitis or diabetes. Okay, this is an important association because it has following implication. एक तो frequency of periodontal disease बढ़ जाती है, stomatitis बढ़ जाता है, candidiasis, cheilitis, oral leukoplakia and dental caries. और ये सब क्यों हो रहा है? Because dryness हो रही है. Xerostomia होगा तो obviously वो cascade बढ़ता जाएगा and we will see more and more problem. So if you diagnose it in the first stage, early stage में आप उसका root cause ढूंढ लेते हैं, तो ये progress नहीं करेगी. Yeah, that is all. That was my last slide. Thank you so much, Dr. Nazam, for such a provoking session. We really appreciate. Sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. Am I audible now? जी.
Okay, ji. Sir, we have a question for you in the chat box. Mm-hmm. Okay, dear sir, Dr. Adil is saying, I've seen many patients in OPD with periodontitis and diabetes. Can you tell me why? Okay, is this related to I can answer it anyway if you want me to. It's yeah. not Sure, sure. related to hepatitis C. Uh, Sure. it could be related to hepatitis C because अगर हम link करें hepatitis C में I did mention bleeding of gums है. जब bleeding of gums होती है, what people do is they stop brushing कि मैं तो brush करता हूँ, it start bleeding. ठीक है. ब्रश नहीं करेंगे ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, जिंजिवाइटिस से पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा. And I mentioned earlier कि diabetes and periodontitis sometimes go hand in hand, and also hepatitis C. तो maybe hepatitis C की वजह से जो bleeding हुई थी उसने brush नहीं किया, it led to periodontitis, और बाद में उसकी manifestation hepatitis की diabetes की form में भी आई है, तो they might be related. दूसरा डायबिटिक्स में पेरिडोंटाइटिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, बिकॉज उनकी हीलिंग ऑल्टर्ड हो जाती है. आपकी बॉडी में मल्टीपल साइकिल्स चल रहे होते हैं, ठीक है, ऑफ एंजाइम्स एंड डिफरेंट केमिकल्स. जब उनमें डायबिटीज के केसेस में सर्टेन एंजाइम्स आर मिसिंग टू कंप्लीट दोज साइकिल्स, उन केसेस में इन्फ्लेमेशन बहुत आसानी से होती है और हीलिंग डिलेड हो जाती है, एंड दिस माइट लीड टू पेरिडोंटाइटिस. Right. Dr. Mukaddas is asking, how does hepatitis related to immunosuppression impact the oral cavity and its response to infections? Okay, because of hepatitis C, we do have some extent of immunosuppression. ठीक है, और I mentioned कि xerostomia, it starts with xerostomia. Dryness होगी तो obviously cavities होंगी, obviously sialadenitis होगे and more issues. तो oral cavity में जब तक flush out नहीं हो रहा, saliva नहीं है, तो obviously bacterial load भी बढ़ जाएगा, and this is gonna lead to more and more problems. All right. Dr. Saman Sultan is asking, should we treat hepatitis or symptomatic treatment of oral manifestations of hepatitis? Please, Anna. अच्छा, if you have figured out कि इनको लीवर के इश्यू की वजह से ये हो रहा है और वो लीवर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, that is great, you just treat the oral symptoms. बट अगर पेशेंट को खुद भी नहीं पता, बिकॉज इन द ट्रस्ट हॉस्पिटल वी सी पुअर पेशेंट्स जिनको आइडिया नहीं होता कि भाई उनका इशू चल रहा है until unless उनको एसाइटिस हो जाता है और एनी अदर इश्यूज. तो यू हैव फिगर्ड आउट, आपने उनके फ्रीडम के कलर भी देख लिया, इट्स येलो, आपको ठीक है या कुछ और भी देख लिया है. व्हाट यू नीड टू डू इज आल्सो रेफर देम, ताकि वो ओपीडी में जाएं और अपनी लीवर की इन्वेस्टिगेशंस भी कराएं. और अगर वो वहां नहीं जाना चाहते, जस्ट टेक द ब्लड और आप एक सीबीसी सिंपल रन करा रहे हैं या सिंपल एलएफटी रन करवा लें, यू विल बी एबल टू नो. बिकॉज जब तक मेन रूट कॉज उसका ट्रीट नहीं हो रहा, आप उनकी ओरल मैनिफेस्टेशंस कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते. Absolutely wonderful session. Thank you for addressing all the questions, Dr. Nizam, and thank you for your valuable time. Truly Thank you. grateful. Thank you so much. Thank you for having me. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. I'm Dr. Narzik Mari, currently serving as Regional Director for Balochistan and pursuing my house job at Civil Hospital, Quetta. It is an absolute honor to be the part of this virtual summit on hepatitis awareness. Today, I have a pleasure of hosting Dr. Amir Zada,
Dr. Amir Zada is accomplished medical professional with diverse academic background including a graduation from University of Lahore, a master's in healthcare management and a master's in molecular medicine and diplomas in molecular biology, genetic human resources management and hijama therapy. He has also done his master's doctoral program from Medical University, China. He is further founder and chairman of Fakhre Pakistan, a research supervisor at Pride, and active member of Civil Society Pakistan. His clinical experience include working in PIMS COVID unit, medical and surgical ICU at leading hospitals such as Azima Sheikh Hospital, Zobia Hospital, and Federal General Hospital. In addition to his medical and academic achievement, Dr. Zada is deeply involved in social work, organizing free medical camp and awareness camp, relief efforts, and various humanitarian initiatives. We are honored to have him with us today and look forward to his enlightening session. Thank you all for your attention. Now, without further delay, I hand over the session to Dr. Amir Zada. Sir, may you kindly proceed? Dr. Amir, may you continue? जी मेरी आवाज़ आ रही है जी sir. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर निज़क इंट्रोडक्शन के लिए और थैंक यू सो वेरी मच टू प्राइड के जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना नॉलेज आप सब के साथ शेयर करें बिफोर गोइंग टुवर्ड माय प्रेजेंटेशन I would like to sincerely appreciate the entire Pride team, including all the volunteers. You guys are doing an amazing job, mashallah. Thank you, Next sir. slide, kindly. ये मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है जो ऑलरेडी आप लोगों के सामने डॉक्टर नाजिक ने कह दिया जी नेक्स्ट स्लाइड Sir, we can't hear you. जी डॉक्टर नाजिक आई डोंट नो मुझे मैं म्यूट हो जाता सर आप म्यूट ना हूँ करें लेकिन आपका म्यूट हो जाता हूँ मेरी आवाज़ अभी आ रही है जी सर अभी आ रही है our topic simply हम अमूमन जो है हेपेटाइटिस एक्सप्लेन कर वेरी सिंपल वर्ड्स में कोशिश करें दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर ठीक है एंड इट्स मींस इन्फेक्शन जो मोस्टली वायरल की वजह से होता है बट नॉन वायरल हेपेटाइटिस ड्रग्स जो है उनकी वजह से हो सकता है या जो मेटाबॉलिक ये हेपेटाइटिस हो सकता है और इसमें दो कंडीशंस जो हैं ये हमें समझने की ज़रूरत होती है दैट इज़ एक्यूट विच इज़ शॉर्ट टर्म एंड क्रॉनिक विच इज़ लॉन्ग टर्म
if we not treat the hepatitis within means acute condition, so it leads toward chronic condition, और ये फिर long period के लिए होता है, and it may cause cirrhosis and liver failure, और इसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कैंसर जिसे हम कहते हैं लिवर कैंसर, वो काज हो जाता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते. सो ये सिंपल अल्फाज में इसको समझने की इसके लिए डिफरेंट जो है पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम इस. जी नेक्स्ट स्टेप. जी थैंक यू. इस नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप इस लिवर को देखें जो हेल्दी लिवर है स्टार्ट में, और इसके ऊपर वायरल हेल्थी लिवर के ऊपर हेपेटाइटिस सी कास्ट किया गया है, एंड देन इट लीड्स टुवर्ड फाइब्रोटिक कंडीशन. देन अगेन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया इस कंडीशन के ऊपर यानी अर्ली एक्यूट कंडीशंस में, एक्यूट स्टेज hepatitis, and again it leads toward hepatocellular carcinoma. और hepatocellular carcinoma में आप देख लें कि सारे लिवर सेल्स कितने स्वेल हुए हैं, एंड दे ऑल आर फंक्शनलेस, और आपका लिवर जो है वो फंक्शन करना छोड़ जाता है. और इस कंडीशन में फिर जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. उसके ट्रीटमेंट क्योर की जो रेशियो होता है वो बहुत को ट्रीट नहीं कर सकते, एंड देन ऑटोमेटिकली आपको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इन नेक्स्ट स्लाइड कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस स्टेज एंड क्रॉनिक स्टेज का पता चलता है कि आया एक पेशेंट जो आपके सामने आता है क्लिनिक के ऊपर आपके सेटअप के ऊपर, हम उसको डायग्नोज करते हैं, तो अर्ली स्टेज उनकी कैसे डायग्नोज करेंगे एंड देन क्रॉनिक स्टेज का हमें कैसे पता चलेगा. अर्ली स्टेज के ऊपर कुछ साइन एंड सिम्टम्स कि इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग विद फैटिग, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, जॉइनेस है यानी उसका कलर जो है स्किन कलर वो येलोइश है, आइज उसके येलो है, और इसी तरह डार्क यूरिन अगर वो कंप्लेन करता है कि यूरिन जो है वो डार्क कलर के हैं, और उसके साथ पेल स्टूल जो है उनका एब्डोमेन पेन उनको फील हो रहा है. सो इट माइट बी कि ये लिवर एक्यूट जो स्टेज है हेपेटाइटिस का ये हो सकता है, एंड देन वी विल गो टुवर्ड डायग्नोस्टिक साइड, और हमें इसके लिए डिफरेंट जो है जैसे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हेल्थ टेस्ट हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन्स वगैरह हम करते हैं, और फिर हम डायग्नोज करते हैं कि आया इसको कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है. एंड क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है कि क्रॉनिक कंडीशन में वो सिरोसिस हो जाता है लिवर. जो इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको सिरोसिस की तस्वीर दिखाई, उसमें आपको क्लियर कट स्कैन्स के ऊपर आपको पता चलता है सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड में कि इसको लिवर सिरोसिस है. और उसमें भी आप क्या करते हैं कि हेपेटिक जो है उसके मीन्स उसका लीवर सारा डिसफंक्शन हो जाता है और वो लीवर अपना काम नहीं करता, उसको हाई कंप्लेंट्स होते हैं उस पेशेंट को. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जी नेक्स्ट स्लाइड्स अबाउट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. जनरली हम जब डिस्कस करते हैं तो वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट वायरल हेपेटाइटिस, but hepatitis are of two types. There are one is viral hepatitis which is hepatitis A, B, C. और यहाँ से भी अगर हम देखें तो जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ हम ये तीन डिस्कस कर रहे होते हैं कि देयर इज हेपेटाइटिस A, B एंड C, बट यहाँ पे हेपेटाइटिस D एंड E. सो इसलिए जब भी हम हेपेटाइटिस को डिस्कस करेंगे, एंड मेरा टॉपिक भी है कि ABCD यानी हेपेटाइटिस के ये तीन पांच टाइप्स हैं, एंड दैट इज वायरल हेपेटाइटिस. एंड नॉन वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है कि अगर कोई शख्स कोई बंदा अल्कोहलिक वो है, अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करता है, उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है जिसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं. टॉक्सिक है या ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, एंड मेटाबॉलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है. ये नॉन वायरल हेपेटाइटिस होते हैं.
See, next slide is a quiz है छोटा सा एंड मैं आपके इनबॉक्स में चेक करूंगा साथ साथ आप सबसे ये क्विज है कि जनरली हम कोई किस हेपेटाइटिस को मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस कंसीडर करते हैं। आप सब जो है इनबॉक्स आपके सामने है एंड देन हम इसके रेशियो भी देखेंगे कि हम इसको क्यों डेंजरस कंसीडर करते हैं, इसकी रेशियो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में फिर वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग काइंडली अपने कमेंट। जी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आप सबने। सो डॉक्टर नाजिक, नेक्स्ट स्लाइड काइंडली। जी, नेक्स्ट स्लाइड देखिए तो वायरल हेपेटाइटिस है जिसमें की फीचर्स हैं, और अगर आप इसको गौर से देखें जो 5 टाइप्स है हेपेटाइटिस के उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि हेपेटाइटिस ए जिसे हम HIV हेपेटाइटिस ए वायरस बोलते हैं, एंड ये ट्रांसमिशन इसकी होती है फीकल ओरल कंटिमिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया। फॉर एग्जांपल एक सेवरेज लाइन है और उसके साथ ही आपका प्रॉपर पानी के पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं, या आपको किसी डिफरेंट सिटीज़ में होता है कि गवर्नमेंट पानी वगैरह आता है पाइपों में, डिफरेंट पाइपलाइंस हुई होती है, तो वो कहीं पे लीकेज हो जाती है और उसके साथ ही जो है इस तरह की चीज़ें जो कंटीमिनेटेड होती है, फीकल एंड यूरिन वगैरह ये साथ मिल जाते हैं, तो वो कंटीमिनेटेड हो जाता है वो वाटर। या इसी तरह अगर कोई फूड आप इनटेक कर रहे हो और वो कंटीमिनेटेड है, तो उसकी वजह से आपको जो हेपेटाइटिस होगा दैट विल बी हेपेटाइटिस ए। ठीक है, और ये क्रॉनिक नहीं होता, ये क्रॉनिक नहीं होता और ये इजीली ट्रीट हो सकता है अगर आप उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें। एंड देन इसकी वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल है, और ये सपोर्टिव केयर से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस इतनी नहीं होती। सो नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी विच इज़ HBV, और ये भी ट्रांसमिसेबल है। ट्रांसमिशन इसकी होती है ब्लड से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, एंड मदर टू चाइल्ड भी ये ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए तो ब्लड से कैसे होती है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेटअप्स पे आप लोग शायद आप लोगों को होगा कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे एक ही सिरिंज से डिफरेंट पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाया जाता है, या एक ही ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड वगैरह से डिफरेंट पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। या इसी तरह जो भी हमारे पास इस तरह के शॉप्स वगैरह हैं, वो अगर एक टाइम यूज़ हो जाए एक पेशेंट के लिए, तो वो जब बार बार यूज़ होंगे दूसरे पेशेंट्स के लिए, सो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन हो सकती है। और इसी तरह सेक्सुअल कांटेक्ट में भी कि अमूमन ये होता है कि मेल एंड फीमेल यानी हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी को भी अगर हेपेटाइटिस है तो वो इजीली ट्रांसमिसेबल हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट। सो इसमें भी इसका ख्याल करना हो जाता है, एंड दैट आल्सो इट इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिसेबल, मदर टू चाइल्ड भी ये ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है। और इसका जो क्रॉनिक रेशियो है दैट इज़ 10% ऑफ एडल्ट एंड 9% ऑफ इन्फेंट। और इन्फेंट में इसलिए कि इन्फेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है दैट इज़ वीक एज कम्पेयर टू एडल्ट, सो उसमें हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है और एंटीवायरल दिया जाता है, इसमें डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग्स, इन्फ्यूजन एंटीवायरल दिए जाते हैं और इसके थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी विच इज HCV, और ये ब्लड एक्सपोजर, IV ड्रग यूज, अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर जो होते हैं उसके थ्रू इसकी ट्रांसमिशन होती है। एंड इसको जो है अगर आप सब ने जिन्होंने भी हेपेटाइटिस सी को मेंशन किया है एज ए मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस, दैट दे ऑल आर राइट, क्योंकि इसकी जो रिस्क, क्रॉनिक रिस्क है दैट इज 75 to 85% ऑफ द केसेस में हेपेटाइटिस सी हमारे सामने आता है और ये क्रॉनिक होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसको ट्रीट किया जाता है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल दिए के, ठीक है, इन्फ्यूजन्स दे के, हाई थेरेपीज दे के, और इसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। फोर्थ वन इज हेपेटाइटिस डी। ये भी आपके पास क्या होता है कि उन लोग ओनली को इन्फेक्ट विद HBV। अगर कोई HBV का जो है आपको पेशेंट है तो साथ हेपेटाइटिस डी के भी चांसेस हो सकते हैं उसको
या हेपेटाइटिस बी भी हो, और इसके लिए भी ये क्रॉनिक है, लेकिन एग्रेसिव होगा। अगर एचबीवी भी साथ उसको हो तो इसमें भी ये एग्रेशन दिखाएगा अपनी। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। हेपेटाइटिस ई है हमारे पास, ये फीकल ओरल है, अगेन लाइक हेपेटाइटिस ए, और ये कंटीमिनेटेड वाटर की थ्रू जो है फैलता है, यानी अकर होता है, और ये रेयर होता है। इसके केसेस बहुत कम आते हैं, बहुत कम, इसके रिस्क फैक्टर्स भी बहुत कम होते हैं। वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल नहीं है और सपोर्टिव केयर से इसको ट्रीट किया जाता है। जी डॉक्टर नाजिक, नेक्स्ट स्लाइड। जी नेक्स्ट स्लाइड, हेपेटाइटिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ओरल हेल्थ। सो चूंकि हम यहाँ पे सारे जितने भी मेंबर्स ऑलमोस्ट जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं लेक्चर, वो ओरल साइड से हैं यानी डेंटल साइड से हैं। सो अगर हम हेपेटाइटिस को उसका इम्पैक्ट देके ओरल हेल्थ के अंदर क्या है, सो हेपेटाइटिस जो है वायरल एंड नॉन वायरल बोथ कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ओरल हेल्थ। किस तरह से, अभी मुझसे पहले जो दो स्पीकर्स ने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, दे एक्सप्लेन वेरी वेल, और उन्होंने ओरल हेल्थ में हेपेटाइटिस को बड़े अच्छे अंदाज में, मैंने सिंपली इसको देखा है क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो हम अभी इसके बाद बेसिकली हमारा था कि सेफ प्रिकॉशंस, और हम किस तरह से करेंगे, सेफ्टी मेजरमेंट कैसे लेंगे, सेफ प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, तो उस पर मैं ज़्यादा बात करूंगा। बट हेपेटाइटिस कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ओरल हेल्थ, leading to complications such as bleeding gums, dry mouth, oral infection, and increased risk of dental problem। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं डेंटल कंप्लेंट्स के साथ, सो अमूमन उसमें हम ट्रीट करते हैं उनके डेंटल इश्यूज को, बट साथ हम ये चीज़ इग्नोर कर लेते हैं, या हमें ये चीज़ की समझ नहीं होती कि ये इशू उनको है क्यों। ठीक है, उनके माउथ के अंदर वो ड्राई माउथ के साथ आ जाते हैं, एंड देन कंप्लेन भी साथ कर रहे होते हैं कि हमें टूथ एक है, और हम उस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं कि इसका ड्राई माउथ क्यों है, ब्लीडिंग गम्स क्यों हो रही है। बस सिर्फ हम उसको क्या करते हैं कि उसके जो टूथ एक है उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, कि उसके साथ उसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, दैट माइट बी हेपेटाइटिस, उसको हम इग्नोर करते। सो इसको भी हमें देखना होगा, हमें इसको भी साथ साथ जो है पेशेंट को बताना होगा, उसको भी डायग्नोज करना होगा, और अगर उसको हम ट्रीट करेंगे तो ओरल हेल्थ के ऊपर उसका बड़ा इम्पेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आर क्वेज टू, हाउ हेपेटाइटिस अफेक्ट ओरल हेल्थ। मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट इसको अगर हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे बिफोर, उससे पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन क्विज के हाउ हेपेटाइटिस अफेक्ट ओरल हेल्थ। इनबॉक्स आपके सामने है जी।
जी थैंक यू डॉक्टर नाजिक। आई डोंट नो मैं म्यूट कैसे हो जाता हूँ, या तो इधर इंटरनेट इशू है। जी नेक्स्ट स्लाइड। बाकी पार्टिसिपेंट ने जो है आंसर्स दे दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दे क्विज से आगे। सो ये कुछ इनके हेपेटाइटिस जो है इफेक्ट करता है ओरल हेल्थ को, लाइक ड्राई माउथ, ब्लीडिंग गम्स, ओरल लेजन्स जो है प्लंग्स। नेक्स्ट। जॉइनेस रिलेटेड ओरल चेंजेस आ जाते हैं ओरल हेल्थ के ऊपर, या अंदर इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट इन्फेक्शंस काज हो जाते हैं। और ये इसमें मैंने साथ साथ सिम्टम्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन की हैं। ये स्लाइड्स आपको सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर नाजिक आगे, नेक्स्ट स्लाइड। मेरी आवाज़ आ रही है जी सर, अभी आ रही है। डॉक्टर नाजिक? आई एम सॉरी टू ऑल मेंबर्स, आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू है काफ़ी, और मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, प्रॉपरली प्रेजेंट पा रहा। अच्छा जी। सो बिफोर डेंटल प्रोसीजर्स जो हमें कुछ प्रैक्टिसेस जो ज़रूरी हैं, दैट इज़ मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू, के हम जो भी पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं डेंटल प्रोसेस, उनका जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसके लिए प्रॉपर चेक करें फॉर लिवर फंक्शन स्टेटस, वायरल लोड एंड क्लॉथिंग जो एबिलिटी है उनकी, जैसे पीटी है, एपीटीटी है, आईएनआर है। सो डिफरेंट टेस्ट हमारे पास है, लिवर फंक्शन टेस्ट हैं। सो ये चीज़ें हम उसके लिए करें बिफोर कि हम उसका प्रोसीजर, ताकि प्रॉपरली डायग्नोस्ड हो कि जिस पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं वो कोई हेपेटाइटिस पेशेंट ना हो। एंड देन एंटीवायरल एंड मेडिकेशन इंटरेक्शंस जो हैं, सम हेपेटाइटिस ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं उनको अगर वो हेपेटाइटिस पेशेंट है, और उनको इंटरेक्ट किया जाता है एनेस्थेटिक एंड एंटीबायोटिक के साथ जब भी उनका प्रोसीजर होता है। ब्लीडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली देखा जाता है, ठीक है, और उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इम्पेयर किए जाते दिए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग गम्स वगैरह ना हो, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर। जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी। सो जब आपने ये सारे प्रैक्टिसेस कर लिए बिफोर कि आप उनका कोई प्रोसीजर करें, देन ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट आपने क्या करना होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल जो डिफरेंट हमारे पास जो है दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टरलाइज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली। उसके बाद हमें क्या करना है? यूज़ बैरियर टेक्निक्स हमने यूज़ करने हैं। बैरियर टेक्निक्स में सबसे अगर हम कॉमन वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, दैट इज़ ग्लव्स हैं, मास्क हैं, आई वेयर हैं, ताकि वो
हेपेटाइटिस आपको जो है इफेक्ट ना करें, ठीक है। सो हमें इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, एंड देन जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उस प्रोसीजर के लिए हेपेटाइटिस पेशेंट के लिए, उसको हम बाद में स्टेरलाइज करते हैं और दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, स्टेरलाइज किया जाता है, और मिनिमाइज करते हैं हम ट्रॉमा को, ठीक है। यानी उसमें हम क्या करते हैं, वाइड एग्रेसिव की स्केलिंग जो है, ये ब्लीडिंग रिस्क इज हाई, अगर हमें पता है कि उसको ब्लीडिंग रिस्क है, हेपेटाइटिस केयरिंग पेशेंट है, सो हम उसमें क्या करते हैं, एग्रेसिव स्केलिंग नहीं करते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक टेक्निक जो है एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि उसको ज़्यादा ट्रॉमा ना हो, उसको ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह ये चीज़ें ना हो। जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी, सो थर्ड स्टेप इज, हमने पहले किया प्री एंड देन ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट एंड नाउ पोस्ट डेंटल केयर। क्या होती है कि अगर कोई पेशेंट जो हेपेटाइटिस पेशेंट है उसको आपने ट्रीट किया, डेंटल प्रोसीजर उसका आपने कर लिया है, सो आफ्टर डेंटल प्रोसीजर आपने उसकी डेंटल केयर क्या करनी होती है कि आपने मॉनिटर करना है ब्लीडिंग और इन्फेक्शन को, और उसके लिए आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है, सारा कुछ आपने करना है रिकॉर्डिंग के उसका जो हेपेटाइटिस था। इनकरेज करना है हाइड्रेशन को, उसने आपने लाजमी उसको कहना है कि वो ज़्यादा इंटेक करे, फ्लूइड इंटेक, और अपने आप को हाइड्रेट रखे, एंड देन सलाइवा सब्स्टिट्यूट फॉर ड्राई माउथ। अगर उसको ड्राई माउथ हो रही है हेपेटाइटिस की वजह से, देन आपने उसको कहना है कि अपने आप को हाइड्रेट करें और सलाइवा जो है सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। रेगुलर ओरल स्क्रीनिंग करनी है, कैंसर स्क्रीनिंग, क्योंकि ये ज़्यादा इंक्रीजेस रिस्क होता है एचसीवी में। अगर कोई पेशेंट एचसीवी के साथ आए डेंटल प्रोसीजर के लिए, तो उसमें ये रेगुलर ओरल कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी करनी होती है, क्योंकि वो लीड्स, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि देन अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है, दैट माइट बी लीड कि वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंशन एंड ओरल केयर टिप्स फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट्स। तो इसमें भी सेम वही बातें हमें बार बार जो है इस चीज़ को कि ओरल हेल्थ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने प्रिवेंशन क्या करनी है, ओरल केयर टिप्स क्या होनी चाहिए। तो इसमें ज़रूरी चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ द डेंटिस्ट आप जिसके पास भी जाएंगे आपको रिकमेंड करेंगे कि मेंटेन स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन, ठीक है। और उसमें बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं कि आपने 2 टाइम्स ए डे जो है आपने ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करनी है, एंटीमाइक्रोबियल जो माउथ वॉश है डिफरेंट टाइप्स के आते हैं वो आपने यूज़ करने हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को आपने हाइड्रेट रखना है, फ्लूइड इंटेक्स जो है वो रखने हैं ज़्यादा, अवॉइड करना है अल्कोहल और स्मोकिंग को। इसके साथ साथ रेगुलर डेंटल चेकअप्स आपने करने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट बाहर की कंट्रीज में, पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस नहीं है, बट जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे ये 3 मंथ्स बाद रेगुलर चेकअप होता है, या बहुत सारे कंट्रीज में 6 मंथ बाद जो है ये प्रैक्टिस होती है रेगुलर चेकअप की, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्म योर डेंटिस्ट अबाउट हेपेटाइटिस स्टेटस। अगर आपको कोई हेपेटाइटिस हिस्ट्री है तो अपने डेंटिस्ट को आपने इन्फॉर्म करना है, बताना है, और उसके नॉलेज में ये चीज़ लानी है ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको डेंटल ट्रीटमेंट दे सकें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर नाजिक। इससे पहले वाला जो था प्रिवेंशन कंक्लूजन से पहले जो स्लाइड है डॉक्टर नाजिक जी, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, और ये बहुत कॉमन है, इजी है कि प्रैक्टिस गुड हाइजीन। अभी मैंने इस पे बात की कि आपने गुड हाइजीन रखनी है, ओरल हाइजीन आपने, उसके बाद आपने इंश्योर सेफ फूड एंड वाटर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस ए एंड ई
जो कि ट्रांसमिट होता है, जो कि फैलता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। सो आपने ये इंश्योर करना है कि जो आप फूड इंटेक कर रहे हो, जो वाटर इंटेक कर रहे हो, दैट इज़ सेफ। और उसके बाद यूज़ प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सेक्स, क्योंकि अगर आपको पता है कि योर पार्टनर इज़ हेपेटाइटिस केयरिंग, तो आपने फिर उसके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या प्रोटेक्शंस जो है वो यूज़ करनी है, ताकि हेपेटाइटिस बी, सी या को हेपेटाइटिस जो डी है वो उसकी ट्रांसमिशन ना हो। अवॉइड अनसेफ अवॉइड अनसेफ मेडिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। ऐसे कोई भी प्रोसीजर नहीं करना, कॉस्मेटिक हो या मेडिकल हो, जो अनसेफ हो और वो यूज़ हो, ऑलरेडी स्टेरलाइज ना हो। तो ऐसे कोई भी इक्विपमेंट या ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने प्रोसीजर नहीं करना। स्क्रीन ब्लड प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, आपने क्या करना है कि टेस्ट डिफरेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेटेड कोई भी आपको है इश्यू, या आप कोई ट्रांसमिशन कर रहे, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपको हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन ना हो। नेक्स्ट लाइन डॉक्टर नाजिक। जी, कंक्लूजन है डेंटल प्रोस्पेक्टिव से, और नेक्स्ट जो स्लाइड होगा वो जनरल प्रोस्पेक्टिव से। सो कंक्लूजन जो इस सारे स्लाइड से डेंटल प्रोस्पेक्टिव से, हेपेटाइटिस स्पेशली एचबीवी एंड एचसी हैज़ a significant implication for oral health, including bleeding disorder, infection, and mucosal changes. Proper dental precautions, infection control, and collaboration with dentists and hepatologists are crucial for safe and effective oral care in hepatitis patient. So, अगर कंक्लूजन सिर्फ हम इस पे गौर कर लें, तो सारा जितना भी हमारे सेफ प्रैक्टिसेस थे, प्रिवेंशन थे, इन सारी चीज़ों को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेंटल प्रोस्पेक्टिव से डेंटल प्रोसीजर के दौरान या डेंटल प्रोसीजर से पहले और डेंटल प्रोसीजर के बाद, इन 3 स्टेप्स के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है, एंड देन फिर उसको कैसे ट्रीट करना है। और हेपेटोलॉजिस्ट के साथ मिलके, अगर कोई डेंटिस्ट के पास एक पेशेंट आता है विद डेंटल कॉम्प्लिकेशंस और उसको एचबीएस है, एचसीवी है, एचबी कोई भी हेपेटाइटिस टाइप है, तो उसको ज़रूर हेपेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन करनी चाहिए, उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ताकि दोनों जो इश्यूज़ हैं उनके हेपेटाइटिस के भी और ओरल हेल्थ के भी, वो दोनों साथ-साथ ट्रीट होते रहें और उसको बाद में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। जी, सो कंक्लूजन इन जनरल फॉर्म, हेपेटाइटिस इज़ ए मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। हम बार-बार इस चीज़ को ज़िक्र कर रहे, और जो प्राइड ने इसका इनिशिएटिव लिया कि हम हेपेटाइटिस के ऊपर बात करें, सेमिनार रख के डिफरेंट स्पीकर्स को बुलाएं कि हेपेटाइटिस कितना ज़रूरी है। तो ये इसलिए कि मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, और इसमें जो मोस्ट कॉमनली लोग जिस पे बात करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी है, इसके साथ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस डी भी। तो ये क्या करते हैं कि इसका सारा जो इसके क्या कहते हैं कॉज या सिम्टम्स आते हैं, वो लीवर के ऊपर आते हैं। लीवर आपके डिसफंक्शन हो जाता है, लीवर अपना काम करना छोड़ जाते हैं, और उसके वजह से आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। और अगर इस पे हम प्रॉपरली इसको हम डायग्नोस करें, प्रॉपरली हम इसको अर्ली स्टेजेस में इस पे वर्किंग करें, सो हम इसको इजीली क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉनिक स्टेज में हमसे ये चीज़ आगे चली जाती है और हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, दैट इज़ क्रोशियल, और ये फिर हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा में भी जा सकता है। जी डॉक्टर नाजिक, नेक्स्ट लाइन। तो here इज़ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एज यूजुअल। मैं हर अपने प्रेजेंटेशन में ये चीज़ मेंशन करता हूँ, बट अनाउंसमेंट से पहले मैं अगेन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे इंटरनेट का शायद इशू है, मैं प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर सका जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट प्राइड से हो, या ऐसी वॉलंटियर हो, या किसी भी एज अ पार्टिसिपेंट जो इंटरेस्टेड है रिसर्च राइटिंग में, क्योंकि प्राइड इनिशिएटिव जो लिया हुआ है रिसर्च पेपर्स लिखने का, डिफरेंट हम
अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अपने मेंबर्स को कि वो आए अपना आइडिया शेयर करें और हम उनको गाइड करेंगे, साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह उसका पेपर जो है उसकी पब्लिकेशन जो है वो हम करा के देंगे। सो ये मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपना आइडिया जो है वो मुझे बता सकते हो और हम इस पे वर्किंग करके आपकी रिसर्च पेपर की तरफ जाएंगे जी। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, sir, for your enlightening session and for sharing your valuable knowledge and experience with us. Your contribution in both the medical field and social services are truly inspiring. Thank you so much, Dr. Nazik. Sir, we have some questions. Go on. Dr. Fatma is asking, can oral lichen planus can be considered as early sign for hepatitis C? Kindly repeat. मेरे इंटरनेट का इशू है, मैं बार बार इसलिए Can oral lichen planus Can oral lichen planus can be considered as early sign for hepatitis C? I guess सर का कोई इंटरनेट इशू है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Saman Sultan, working as an assistant director at Pride. Thank you very much, Dr. Nazik. You did an amazing job as a host. And thank you, Dr. Amir. Your session was very informative, very insightful. Now I'm going to host Dr. Atif Haroon. Dr. Atif Haroon is a highly accomplished consultant oral and maxillofacial surgeon, recognized for his dedication to clinical excellence, surgical precision, and a strong commitment to advancing oral health care in Pakistan. He began his professional journey at the esteemed Dr. Ishratul Ibad Khan Institute of Oral Health Sciences, earning his Bachelor of Dental Surgery (BDS) from 2011 to 2016. He completed his house job in 2017, where he gained practical experience across various dental specialties. Pursuing his passion for surgical practice, Dr. Haroon undertook rigorous postgraduate training in oral and maxillofacial surgery, completing his FCPS training 2018 till 2022 and earning his fellowship by clearing FCPS Part 2 in 2023. Dr. Haroon is currently serving as a consultant oral and maxillofacial surgeon at three prestigious healthcare institutions: Pakistan Eye Bank Society Hospital, Shadman Town, AO Hospital, Nazimabad, Docs Clinic, DHA Phase 7. His clinical expertise spans a broad spectrum of conditions, including oral cancer diagnosis and surgical management, facial trauma and maxillofacial injury repair, oral ulcers, lesions, and mucosal pathologies, oral submucous fibrosis treatment, jaw, facial, and neck pathology, advanced dental implant placement, and full oral rehabilitation. Dr. Haroon has also developed a strong proficiency in dental implantology, offering innovative and patient-centered solutions for tooth replacement and functional restoration. His work in oral rehabilitation reflects a commitment to combining the surgical skill with aesthetic excellence. At today's virtual summit, Dr. Atif Haroon will be delivering an insightful presentation on the topic Universal Precautions, Myths, and Realities in Dentistry. With his rich clinical background and clear communication style, Dr. Atif Haroon's contributions are sure to leave a lasting impact on today's audience. I would like to invite Dr. Atif to please come on board and continue the session. Thank you. Assalamualaikum everyone. Can everyone hear me? Yes, sir, you are audible.
Welcome. Okay, and Assalamu my alaikum, sir. screen is also visible to everyone. Yes, sir. Okay. So, as Dr. Saman rightly described, I'm Dr. Atif Mohammad Harun. She very generously passed on a lot of compliments. I'm humbled. My topic that is given to me, I would like to avail the opportunity to share a few of my thoughts regarding this topic: universal precautions, myths, and realities in dentistry. As you must have already been taught a lot about hepatitis and its manifestations, I would, in this presentation, like to stress regarding the precautions which are basically used to prevent the transmission of this pathogen. So, as already been told, blood-borne pathogens like hepatitis and B are risk factors in dental settings. Uh, Beside hepatitis B and C, there is also hepatitis A, D, and E, which are not as likely to be transmitted. So my focus would be more on hepatitis B and C only. So in order to prevent the transmission, the universal precautions are in place, which are the standard defense. And in this presentation, I would go through some of the myths that circulates among our dental society, among the common people, and among our staff, auxiliary staff as well. And I would like to bring about some facts which would help obtain better infection control. So, starting off, why are the universal precautions important and why do they matter? These universal precautions are put into place assuming that all the patients are potentially infectious, regardless of age, gender, and race. All patients are treated equally, and all of them are considered potentially infectious. So all the measures are taken as a standard and applied to each and every patient. The Excuse purpose me, of sir. this, sorry. एक्सक्यूज मी सर, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो स्लाइड है सर, वो विजिबल नहीं है. स्क्रीन शेयर विजिबल नहीं है. अभी तक नहीं था या अभी शेयर नहीं हो रहा? सर, ओनली योर फेस एंड योर कैमरा इज विजिबल, बट द प्रेजेंटेशन जिससे आप पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट विजिबल. Okay, I thought it was visible. Let me go through it again. Is it visible now, the screen? Yes sir, it is visible now. Right. Thank you very much, sir. Okay, let me open the slide share. Is it visible now? Yes sir, it is visible. Okay. But I can't see my slide myself. अभी No, slides आ रही हैं या नहीं आ रही? नहीं सर, स्क्रीन इज विजिबल बट द स्लाइड्स आर नॉट विजिबल. So let me अर्लियर जब reopen आपने it. शेयर किया था तब आपकी स्लाइड्स प्ले हो रही थी. Okay, let me open it again. How about now? Is it visible? Yes sir, it is visible now. Thank you very much, sir. Okay. Is my face also visible or right now is just the screen? Sir, both. Your face is also visible, your camera is on, and the slides are also being shown on screen. Right. So we went through this slide. I thought the slide was visible to everyone. Okay. So this is where I was. So with universal precautions, we assume that all patients are potentially infectious. The goal is to protect the staff and the patients, so the transmission can be vice versa. If the staff is infected, it can transfer to the patient. If the patient is infected, it transfer to the patient. So the universal precaution protects both of them. Also, there are legal and ethical responsibilities. So while you take the universal precautions, you are less likely to encounter legal and ethical responsibilities. For example, if a patient comes to you
after having the treatment, so a month or so later, claiming that he has encountered the acquirement of hepatitis B or C. So, if you have universal precautions implemented at your clinic or at your dental setting, whatever, so you are less likely to get into trouble. Also, since we practice under certain guidelines, these precautions are mandated by the CDC and OSHA. These are the two settings internationally that defines all the guidelines. CDC stands for Controlled Disease Center, and OSHA stands for Prosperity Security Health Authority. Right. So the core components of universal precautions include hand hygiene. Hand hygiene is basically done by using soap and water. Personal protective equipment includes your gloves, your face mask, your goggles, face cap, and apron or a disposable gown as necessary. The sharp safety meaning the disposal of the syringes and the cartridges and blades and anything that is sharp into a proper designated bin which is properly disposed of. The sterilization and disinfection. Okay, the sterilization in a dental setting refers to autoclaving, and disinfection usually refers to chemicals used to disinfect or to kill the microorganisms of the counters and the surfaces. Surface barriers usually includes the cling films and all kind of barriers that you put on over the surfaces and over the dental tray and the mirror handles and the armrest, head surface, and over the patient as well. Safe injection meaning the technique that is employed to uh, use the syringe if not disposable or if meant to be used again and again. So the injection has to be put in a safe position via certain techniques. So all these methods are the components of universal precautions. Okay, so starting off with myths, I have some of them. I can't go through all, but I've collected a few that are most commonly circulated in our setting. So the first myth is all type of hepatitis are equally serious, meaning A, B, C, D, and E. Well, that's not the case. The reality is only hepatitis B and C have serious sequelae, while the hepatitis B virus is the most easily transmitted. So hepatitis A, D, and E are not so common in our setting, and even found they does not have as serious sequelae. Hepatitis B and C sequelae, I'm sure previous speakers have talked a lot about जो hepatic उसके जो consequences होते हैं, right? So the second myth is hepatitis is rare. Well, according to WHO, 325 million people have hepatitis B, C, or both. So, in context to our presentation, what we have to note is you don't know which out of the patients that you see is going to have one of these pathogens. So, the universal precautions are there to help you prevent transmission from the unidentified individual. The third myth, hepatitis B and C can be transmitted by contacting patient and therefore treatment should usually be deferred. So hepatitis B and C does not transmit by contacting as in hand contact with the patient, and the treatment should not be deferred unless the patient is in acute viral state. So if the patient who has been treated or has a history of treatment and the viral load is low, he or she he or she has the right to undergo the routine dental treatments. So the next myth is hepatitis is genetic. Sorry, no, that's not the case. Transmission can only occur rarely during childbirth. Otherwise, it's not genetic. So if a patient comes to you with a history of hepatitis and he or she seeks a treatment of a child, a sibling, or anyone that is a close relative to the patient, you cannot assume that he or she may also be affected because it's not genetic. So there is vaccine for all types of hepatitis. That's not the case. So if a patient comes to you and uh, if you ask the vaccination history and the patient claims that he or she has been vaccinated, you cannot assume that hepatitis vaccination is done. Even if done,
It's only for hepatitis B and hepatitis A. Hepatitis C has no vaccine. So, if a patient claims that he or she is vaccinated, you cannot assume that he or she is protected from hepatitis C. So, the universal precautions are again implemented. Hepatitis C cannot survive outside of the human body. It is a common belief that this virus cannot survive outside a host body. Unfortunately, hepatitis C can remain fully alive 6 weeks after drying on a surface and can still infect. So, if you assume that you have closed your clinic and you come again in the morning and you have a belief that since the clinic has not been used overnight, the surfaces are dry, the virus could not have survived. That's not the case. It can survive for up to 6 weeks. So, again, the universal precautions have to be taken. The next myth is hepatitis is incurable. So, if a patient comes to you and claims that he or she has undergone a treatment and is cure free, you should not feel that it's not incurable. So, hepatitis C is curable with the advent of modern antiviral medications. However, hepatitis B is only treatable. So, you have to know both sides. Hepatitis C cannot be cured. So, hepatitis B cannot be cured. It is only treatable. The viral load goes down and the patient becomes chronic. While hepatitis C is curable. So, if a patient claims that he or she has gone and hepatitis C treatment, and the doctor has deemed that he or she is viral free, that is right. But still, the precautions are to be taken. People cannot contract hepatitis C twice. So, yes, if a patient has had the treatment and is shown that he or she is hepatitis C free, it doesn't mean it can't be contracted again. So it does not build, the body does not generate any antibodies that would prevent from reinfection. So again, the precautions are necessary. Blood exposure is risky, saliva is harmless. That's not the case. Yes, true, the transmission is via blood, but the saliva also contains the remnants of blood. So, hepatitis B has been detected in saliva and can be infectious, especially during procedures that involve bleeding gums, extractions, or scaling. So, unfortunately, all the procedures that we do, somehow we are going to be encountering blood in saliva. Hepatitis C is nevertheless less transmissible by saliva. Hepatitis B is more prone to be transmitted, but yes, you have to take the precautions. The 10th myth is once an instrument looks clean, it's safe to reuse. Okay. At times, we come across a situation where we have limited instruments and the auxiliary staff mostly tend to clean it with help of a swab or the regular disinfecting clothes and hand it over again saying it looks clean, has been clean, but it's not clean. The microbes are not visible to the naked eye. So, yes, proper sterilization is necessary. So, cleaning, disinfection, and sterilization is important. So, this is also one of the component of universal precaution that you have to go through this process regardless of how clean the instrument looks like. One type lapse is protocol won't matter. Often you come across a situation when you are running out of time or when you have uh, let's say a patient of your own and you go like, yeah, I've known this patient for a long time, I don't think he or she is going to have any transmissible disease, so maybe we can just uh, skip the protocol for once. So no, that should not be the case. Even a single lapse like skipping hand washing or reusing gloves can result in serious infection transmission. So the purpose of universal precaution is to make sure that you do it consistently at every patient every time. That's how you are going to ensure safety of the patient and yourself as well. Disposable instruments don't need sterilization. As statement looks quite true.
Yes, it is true, but the disposables are meant to be discarded after single use. So you don't sterilize them and you can't reuse them. If you have reused them accidentally, it nullifies the universal precautions and therefore risk cross contaminations. Yes, that's the important one. Wearing two pair of gloves offer better protection. That's the common concept, unfortunately, among quite a many of our colleagues. Wearing two gloves is going to protect against the hepatitis. That's not the case. The only area where you need two pair of gloves is where you are going to break one of the glove. That's where the indication of pair of gloves comes, where you have wire works and high risk surgeries. Otherwise, a needle that is going to pierce one pair can easily pierce two pair of gloves as well. So the purpose of two pair of gloves is not to offer uh, needle stick injury or protection in sense of transmission of the virus. So, double gloving is not universally recommended in dentistry. It can be used during surgical or high risk procedures, but it's not a substitute of correct glove usage, hand hygiene, and PPE. So, basically, if you see a patient, you come across a situation where you feel the patient has a high risk of transmission, use a single glove, make sure it's of the proper size, and use all the correct equipment, and you should be good. You don't need to wear two pair of gloves. If there is no visible blood after a needle stick, it's not serious. So that's another concept, that if you have a needle stick injury, but the blood doesn't come out, so you tend to feel that maybe the injury was not deep enough to reach the blood vessel or pierce the skin barrier, but that's not the case. The infection can be transmitted with microscopic amount of bloods. So all sharp injuries should be reported and followed up with exposure protocol immediately. So no matter how many times or how slight the injury feel like, you should go to the nearest infection control quality control team and report the incident and follow the exposure protocol. If instruments were soaked in disinfectant, they don't need autoclaving. Well, hepatitis B and C are usually killed with disinfectants, but when we talk about universal precautions, we are not confined to hepatitis. So, despite the fact that the disinfectant might kill off the hepatitis C and B virus, other microorganisms such as the spores, bacterial spores, won't be killed. So, you need proper sterilization, which is the standard is the steam sterilization through the autoclave for all the reusable instruments. However, some instruments can't be sterilized, such as your motors and other instruments which can't be autoclaved. Those are the exceptions, of course. You only need to clean surfaces at the end of the day. No, you don't have to clean at end of the day only. It should be disinfected between every patient and covered with the proper barriers. The blood-borne pathogens can remain viable for hours to days on surfaces. I've discussed this a little on previous slide as well. So yes, you need to clean surface with every patient. Universal precautions are overkill for pediatric or geriatric patients. If you feel the pediatric population is less likely to harbor the virus, or if the old age patient might not have it because they've gone old, so they are less likely to have the virus in their body, that's not the case. All the patients, regardless of age or health status, can be carriers of the infectious disease. So the risk is not unfortunately determined by age. No matter what age the patient is, you have to follow the precautions. If a patient refuses to wear a mask or follow safety protocols, it's okay to make an exception. Sometimes you come up with a situation where the patient makes a justified excuse not to wear mask. For instance, saying that wearing a mask makes him short of breath, or uh, any other excuse that he or she may make.
and you tend to give an exception. So if this usually occurs when the patients are sitting in the waiting area. So if you feel the patient are waiting in the waiting area and they are to wear the mask, they should wear it, no exceptions. If the patient can't follow your instruction, he or she should be asked to leave and make another appointment. Yes. Only visible ill patients can transmit hepatitis. So, if the common belief is that the hepatitis patients who have hepatitis are likely to have some of the symptoms, that's not the case. Patient can be entirely asymptomatic and still harbor the virus in their body. So, symptoms or no symptoms, the universal precautions are in place. Hepatitis C is easily transmitted in dental settings. That's the fear among the dentists in our society, that a patient with hepatitis C is a dangerous patient. That's not the case. While it is bloodborne, it is less efficiently transmitted than hepatitis B virus. If you use proper precautions, the transmission is extremely rare in your environment, provided that you use the PPEs and you use the barriers and the instruments are sterilized in the proper fashion. If a patient does not disclose a hepatitis diagnosis, there is no risk. So, if a patient claims that he or she does not have a hepatitis, that's not for sure, and you can't just assume or take a word of mouth. The precautions are the reason why they are in place to eliminate dependence on disclosure. Every patient has to be treated as potentially infections, no matter what claim the patient makes. Once vaccinated for hepatitis B virus, dental workers are safe. So, if that's the belief that if you had a hepatitis B vaccine, you are protected from hepatitis, that's not the case. You are not protected against hepatitis C virus. So, continued adherence to universal precautions is necessary even after the vaccination. Universal precautions are excessive for routine or simple dental procedures. Suppose if you see a patient and you believe that you are going to make a consultation and do nothing else, and maybe you can be a little laxed about the precautions. That's not the case. Even oral examination, a simple oral examination, can involve blood or saliva exposure. Because we deal with the mouth, we always tend to come across saliva, and saliva has minute amount of blood in it. So studies have shown that lapse in protocol can lead to cross contamination and infection risks. So no matter what you do, if you encounter a patient, you should take universal precautions. So these were some of them. I hope the most of the misconceptions have been clarified. So the question that arises is, how do we ensure that the universal precautions are taken every time, or what steps should be taken to ensure the implementation? The first thing that you need to do is to train yourself and your staff and make an audit out of it. See intermittently that what your concept about universal precautions are. There are audit teams who visit your clinic and make sure that the precautions are implemented the right way. Sterilization logs, that's very helpful for you to identify if the instruments are sterilized properly, if your floor is mopped properly, if the barriers that were replaced, how frequently they were replaced, if there is a need to do it again. You know, whatever the log will help you realize your timings, and it will clarify the situation. Surface disinfection protocols, yes, because dental settings has lot of counters, lot of cabinets, lot of surfaces.
So a proper protocol should be in place when to do it and how to do it. The staff should be trained about it. So if you have clear policies and you enforce them rightly, you are less likely to get into trouble. So my key takeaway or takeaway home message would be universal precautions are there for the safety of yourself and your patients. The myths that I just described, these myths can actually lead to dangerous practices if not followed properly. Uh, you know, the 325 million people that I said before are hepatitis infected because of this reason. And unfortunately, dental treatment is one of the leading cause of transmission of the virus. Consistency and compliance protect everyone. Yes, so you have to do it every time and with every patient. These are the references where I took my uh, data from. So yeah, questions are most welcomed. I'll try to answer them with the best of my capability. Are we going to unmute or are there going to be messages? No, no, sir. Thank you very much for the insightful, informative, and such a elaborative session. बहुत सारी myths sir आपने clear कर दी. Thank you very much for your time and You're most explaining it welcome. so well. Sir, we have some questions in the chat box that I'll be asking you and आप फिर से address करेंगे. Sure. Sir, we have one question from Dr. Adil. He's asking, the kit test method is enough or we should go for PCR? Well, being a surgeon, what we do is we usually use the antigen and antibody test. The antigen is for the hepatitis B, and the antibodies are for hepatitis C. These are more than enough. But why would you want to do it? I mean, if you feel the patient is high risk, or if you highly feel there is a need to do it, otherwise you don't do it routinely. All right, sir. Thank you very much. Dr. Fatma is asking, hepatitis B and C always show symptoms either orally or systemically. Is it a myth or truth? Not always. For instance, a patient who has had hepatitis B or hepatitis C virus and has undergone treatment, and if they become carriers, they are not likely to show any symptom. And hepatitis C is curable. So, if cured, you're not going to have any symptoms. Same goes for hepatitis B. Hepatitis B is not curable, it is only treatable, but you go into a carrier state. So, when you are a carrier, you can only transmit, but you don't show any symptom. That's the definition of carrier. Thank Only you. in acute state, only in acute state you are likely to have symptoms. That too, not always. Oral symptoms are not a necessary manifestation of hepatitis. Okay, sir. Thank you. I hope Dr. Fatma, your question now it's clear now. Sir, Dr. Ahmed is asking, is it true that single-use instruments completely eliminate the risk of hepatitis transmission? Of course, if you use it singly and you discard it off, yes, of course. All right, sir. In fact, what the practice is, you should try to use disposable instruments as much as possible. We can't do it all the time. I mean, you can't use forceps, you can't use your elevators, you can't use everything disposable. Examination set and maybe the tray that you use to carry the instruments, that can be disposable, and then they should be used singly. All right, sir. Thank you very much. These were the few questions that you addressed. You are very kind, sir. We are very grateful. There are few appreciation messages for you. Dr. Faustina Uzoma, I think she is saying thank you, sir, for the session. Dr. Farooq is also appreciating that it was very informative. Dr. Razia Hassan is also saying very informative, insightful session. And I'm Dr. all good. Thank you. Dr. Ahmed is praising that it is an excellent breakdown of myth versus realities in dental settings. Grateful for this session. Thank you very much, sir, for your time, for you taking out your time for us for this visual summit and explaining the difference between myths and realities so well.
Thank you, sir. You're more than After welcome. this, I would also like to avail the opportunity of letting our crowd know that my email can be shared, and if you have any queries, they can be promptly answered. sir, if you have a slide of your email, can you please just share it so that if anybody I wants don't. to. I'll just write it over here. I hope this is visible to everyone. Yes, sir, it is. Can't seem to write at the rate. I don't know why. Um, okay, sir, I'll take a picture and I'll share in the chat box. So this is at the rate Gmail, right? Sure, sir. Thank you very much, And sir. I would also like to show a picture. Yeah. So this is me in my OT. Yeah. So I just this picture has two significance. I would like to share Sure, my sir, thoughts please. on it. Firstly, I just love this room. This is where we operate, and as you can read the captions, this is a free oral cancer surgery. So we are one of a kind institute where we do free oral cancer surgeries, free of cost. The entire treatment is free, from medications to the cost of the surgeries to the stay in hospital, the ICU, ward, and even take home medications are provided free of cost. And it's a state of art institute, and everything is done with standard, as you can see, uh, with in context to our presentation. Everyone is taking the universal precautions. You can see the aprons, masks, the gloves. The goggles should have been there. Some wear it, some don't, but yeah, that should have been also there. And plus everything that it comes in contact is being protected by the barriers. So yeah, this picture also is a very good example of what the universal precaution should look like. Not necessarily like this in the dental setting, but yeah, something like this. Yes. Uh, Definitely, sir. Highly appreciable. Everybody in the comment section, in the chat box, is appreciating your efforts and the way you have elaborated with your own example. Sir, somebody is asking the setup where this surgery is being done. So this is Pakistan I Bank. I'll just write it off in my. Just, I hope I'm not taking too long. No, no, sir. Please carry on. Pakistan. If you Google it, you can find the place. It has two branches. So the one where we operate is in Shadman Town. It's North Karachi. All right, sir. Thank you very much. So currently, sir is also working as a consultant oral maxillofacial surgery in Pakistan Eye Bank Society Hospital, which is Shadman Town, North Karachi. I have already mentioned in the sir's intro. Thank you once again, sir, for your elaborative, insightful session. We are truly grateful. Pride in Team is extremely thankful, and so is the audience. Thank Thank you, you. sir. And now I would like to invite Dr. Hira, who will be continuing with the rest of the session. Thank you, sir. Thank you, dear audience. Thank you. You're welcome, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hiraisani and I'm the Regional Director of Pride. It is my absolute pleasure to welcome you all to this virtual summit organized by Pride with the aim of raising awareness about hepatitis and its implication in healthcare. Today, I have the honor of introducing our esteemed speaker, Dr. Neha. Dr. Neha is a graduate of the Montmorency College of Dentistry and is currently pursuing her MPhil in oral pathology at the University of Health Sciences.
She has successfully completed her academic requirements and is actively engaged in research. In addition to her academic achievements, she recently cleared the Australian Dental Council Part 1 examination on her first attempt and is currently preparing for Part 2. With a solid foundation in dentistry and a growing interest in public health and infection control, Dr. Neha is here to shed light on a topic of critical importance: hepatitis transmission risk in dentistry. Over to you, Dr. Neha. Thank you so much, Ira, for such a wonderful introduction. I am really humbled. Let me just share my screen. Can you all see my screen? Yes, happening? Okay, can you see my screen? Hello? Yes, we can. Okay, awesome. Okay, and can you hear me properly? Hello? Yes, we can. Okay. Yes, Dr. Neha, we can hear you properly. Okay, so my topic is hepatitis transmission risk in dental setting. I'll start with a little background. Before me, sir ने बहुत अच्छा explain किया viral hepatitis को और everything, so I'll just keep it short. We know कि viral hepatitis major public health issue है, especially पाकिस्तान में, और majorly जो hepatitis है उसकी hepatitis B और C ये combine जो है इसका बहुत ज़्यादा burden है पाकिस्तान में. Almost like 12 million Pakistanis they are living with HBV or HCV. Or many infections are acquired unknowingly in medical and dental settings, making infection control critical. Unfortunately, us dentists हम बहुत बड़ा इसमें major role अदा कर रहे हैं इसकी spread में because of our improper infection control. So first of all, let's just go through the types and we'll see कि कौन सी types हैं जो कि हम ज़्यादा spread कर रहे हैं जिस और कैसे देखना है. So first, I'll start with hepatitis A. हमें पता है fecal oral route होता है and contaminated water is the main cause. और ये सिर्फ acute होती है, इसका कोई chronic infection नहीं होता and fortunately इसकी vaccine भी available है. Dental relevance इतनी ज़्यादा नहीं है, minimal है because it's not bloodborne. So standard hygiene, hand washing, clean water, that's enough to prevent hepatitis A. Then we have hepatitis B. Hepatitis B जो है that is crucially important because it's transmitted via blood and body fluids, needles, sharp injury, sexual contact. ये सब जो है इसकी causes हैं spread की. Chronic infection होता है और fortunately इसकी भी safe and effective vaccine exist करती है. Dental relevance ये है कि it's very high, HPV is highly infectious and can be spread by microscopic blood on instruments or via punctures and it remains viable on surfaces for up to a week. So like अगर हमने clinic की surfaces ठीक से clean नहीं की, we are doing everything, हम autoclave कर रहे हैं अपने instrument को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा टेबल टॉप है, शेल्फ है साइड पे, वो ठीक से क्लीन नहीं हुआ और अक्सर ये चीजें मिस हो भी जाती हैं तो वहां पे वायरस कैन स्टे अप टू अ वीक सो दैट इज रियली अलार्मिंग. Then we have hepatitis C. It's also transmitted primarily through blood, sharing needles, unsafe injections, transfusion, and less commonly through sex or childbirth. And it can also become chronic. And इसकी कोई vaccine available नहीं है, तो dental relevance is very high. It spreads via blood to blood contact. Proper sterilization बहुत जरूरी है. Sharp injuries को provide करना की है. Because हम इसको prevent वैक्सीन लगवा के हम वैक्सीन तो है नहीं तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि हम हाईली रिलाई कर रहे हैं अपने इन्फेक्शन कंट्रोल पे. और डेंटल प्रोसीजर्स जो हैं दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर सोर्स ऑफ एचसीवी एक्सपोजर इन पाकिस्तान. और ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में एचसीवी जो है, एक तो ये कि ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो पाकिस्तान 5th नंबर पे आता है हेपेटाइटिस बी और सी जो है उसकी ट्रांसमिशन के लिए. और उसमें भी जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं ये मेजर सोर्स हैं इसके स्प्रेड का. Then we have hepatitis D. It's like we call it a defective virus because it requires HBV to infect. So ये co-infection या supra-infection होता है. So if a patient has HBV,
तो देयर इज अ चांस कि उसको हेपेटाइटिस बी भी होगा। तो अगर हम हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डी की प्रिवेंशन साथ ही होगी। इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती, बट एचबीवी की वैक्सीनेशन ऑब्वियसली जब ये हो ही हेपेटाइटिस बी के होने के बाद हो रहा है, तो अगर हम एचबीवी की वैक्सीन लगवा लें तो वो ऑटोमेटिकली एचडीवी के भी चांसेस कम हो जाएंगे। डेंटल रेलिवेंस हाई है, एनी रिस्क फॉर एचबीवी ट्रांसमिशन इज ऑल्सो रिस्क फॉर एचडीवी। और कोई भी अगर एचबीवी पॉजिटिव पेशेंट हमारे साथ आता है तो विल ट्रीट देम लाइक पोटेंशियली एचडीवी पॉजिटिव की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। And then lastly, we have hepatitis E, transmitted fecal-orally. ये contaminated water, undercooked meat, ये बिल्कुल जैसे हेपेटाइटिस ए है उसकी तरह होता है। ठीक है, और इसका क्रॉनिक होता है सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, और वैक्सीन है लेकिन इतनी वाइडली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। डेंटल रेलिवेंस इसकी मिनिमल है, ब्लड के जरिए स्प्रेड नहीं होता, मेनली सैनिटेशन इशू है। तो अगर हम गुड जनरल हाइजीन रखेंगे, क्लिनिक में क्लीन वाटर यूज करेंगे, हैंड वॉशिंग यूज करें, तो हम HEV का रिस्क जो है उसको मिटिगेट कर सकते हैं। सो आउट ऑफ द 5 टाइप्स जो मेजर हमारा आगे मेरी प्रेजेंटेशन का कंसर्न होगा वो बी और सी से होगा, क्योंकि ए और ई जो है वो तो मेजरली सिर्फ ये है कि भाई गुड हाइजीन रखें, क्लीन वाटर यूज करें, हैंड वॉशिंग करें। बट बी और सी चूंकि ब्लड बॉन्ड है, और एज अ डेंटिस्ट ब्लड के साथ तो हमारा जो है एक्सपोजर होता रहता है, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। Let's just like quickly go through the epidemiology. I know epidemiology everyone feels कि बहुत boring होती है, but I think थोड़े बहुत stats जो हैं वो दिखाने जरूरी होते हैं, just so we know कि कितना prevalent है इशू, कितना ज्यादा है। तो like हमारी 2.5% जो population है that is infected with HPV, और combined अगर हम बी एंड सी के केसेस देखें तो एज आई टोल्ड बिफोर कि पाकिस्तान 5th इन द वर्ल्ड रैंक कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड रैंकिंग। तो 12.5 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए थे इन 2022 अलोन, एंड अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1,50,000 न्यू केसेस ईच ईयर रिपोर्ट होते हैं। एंड ऑनगोइंग ट्रांसमिशन इज फ्यूल्ड बाय हेल्थ केयर रिलेटेड प्रैक्टिसेस, एंड अकॉर्डिंग टू WHO द मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैच दिस इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। और ज्यादातर ये हमारे पास क्रॉनिक फॉर्म में होता है, और एसिम्टोमेटिक शुरू में होता है तो पता भी नहीं होता, और आप यू आर लाइक लिविंग विद दिस। Now we have, let's go to the transmission routes of hepatitis viruses in history. सबसे पहले तो जो major blood to blood contact है, primary route है हमारे पास ये B, C and D की transmission का। Exposure हमारी percutaneous injuries जो है like needle stick injury हो गई, और या फिर कोई cut लग गया from a contaminated instrument, या infected blood का आपकी mucous membrane या किसी open जो open wound है उसके साथ contact के through ये spread करता है। हमारे साथ बहुत दफा लाइक इवन यूज टू हैपन इन हाउस जॉब के अगर आप कर रहे हैं हैंड पीस से कुछ, तो आई में स्प्लैटर पड़ जाता था इफ यू नॉट वेयरिंग आई मास्क प्रॉपर्ली, और अगर आपकी चेयर पोजिशनिंग अच्छी नहीं है। सो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट इज लाइक रियली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हम उसका आई मास्क जो है दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम आई इक्विपमेंट प्रॉपर्ली पहने। Then we have saliva and other body fluids. Saliva itself जो है उसके अंदर हमारे पास HBV हो सकता है in infective individual and is considered potentially infectious in dental settings. HCV भी detected हुआ है saliva के अंदर, लेकिन उसकी transmission खाली saliva पे अभी तक as such जो है conclusively कोई document नहीं हुई, but HBV की। तो रिस्क इन डेंटिस्ट्री अराइजेज जब आपका स्लाइवा कंटेमिनेट होता है ब्लड के साथ, और हमारा तो होता है, या स्लाइवा ब्लड के साथ कंटेमिनेट होता है, so that is something that we need to take care of. Then we have contaminated instrument and surfaces. HBV जो है it's really resilient, more than 7 days तक ये surfaces पे रह सकता है। तो अगर आपके instruments properly स्टेलाइज नहीं है, या आपकी सर्फेसेज जो है लाइक डेंटल चेयर, लाइट हैंडल, ट्रेज, दीज आर द थिंग्स जो कि अक्सर मिस हो जाती हैं। आप सब कुछ क्लीन कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कर लेते हैं, लाइट का हैंडल रह गया, उसके ऊपर प्रॉपर बैरियर नहीं लगा हुआ है, या बैरियर अगर है तो आप दिन में एक दफा चेंज कर रहे हैं, हर पेशेंट के बाद चेंज नहीं कर रहे, तो दैट इज अलार्मिंग। ठीक है, a patient's blood on a tool or countertop can infect someone even days later if not cleaned. Then we have aerosols and splatter. हमारे पास काफी सारे डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एरोसोल्स जनरेट करते हैं, एंड जिस एरोसोल्स के अंदर वैसे तो एरोसोल इज नॉट द मेजर कॉज, लेकिन फिर भी एरोसोल के अंदर भी समटाइम्स स्लाइवा समटाइम्स ब्लड होता है। तो मेजरली तो हम रेस्पिरेटरी पैथोजेंस जो होते हैं उनके लिए वी नीड टू बी रियली केयरफुल अबाउट एरोसोल एंड स्प्लैटर, बट
कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक HBV HCV का भी जो है जो ट्रांसमिशन है रिस्क है विद एरोसोल्स एंड स्प्रेडर, बट इज वे लो देन द डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट. Then we have patient to patient via indirect routes, inadequate infection control जो है उससे आपका patient to patient transmission हो सकती है. Like अगर आपने एक tool infected patient में use किया, उसको properly sterilize नहीं किया, then आप उसको किसी दूसरे patient में use कर रहे हैं, तो दूसरा patient जो है वो भी expose हो जाएगा. इसी तरह injection needles और anesthetic cartridges अगर आप reuse कर रहे हैं, तो that could be a major cause of. So next, let's go through the transmission risk in the dental procedures. हमारे पास सबसे पहले तो LA इंजेक्शन ही होते हैं, बिकॉज LA में नीडल इन्वॉल्व होती है. नीडल ना सिर्फ ये कि अगर आप सिर्फ ये नहीं कि अगर आप एक नीडल दूसरे पेशेंट पे यूज करें, वो तो एक बिग नो है. इसके अलावा वैसे नीडल से नीडल स्टिक इंजरी जो है, दैट इज लाइक इम्पोर्टेंट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन. Then we have surgical procedures like extraction, periodontal surgery, implant placement. They often involve bleeding, and during these, both patient and provider both are at risk. So blood can contaminate instruments, suction system, environment. और अगर आपका infection control अच्छा नहीं है, instruments properly autoclave नहीं है, blood splatter clean नहीं हुआ, तो next person जो कि इनके साथ contact में आएगा, expose हो सकता है. Dentists performing such procedures, they should be extra vigilant. Disposable covers use करें ताकि minimize कर सकें contact with blood को. Then we have dental instruments and hand pieces. हमारे वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो पेशेंट के मुंह में जाते हैं, मिरर, स्केलर, फोर्सेप्स, बर्ड्स, एवरीथिंग, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्लड या टिश्यू फ्लूइड लगता है. तो अगर वो भी प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं होंगे तो पोटेंशियल व्हीकल्स हैं फॉर वेब हेपेटाइटिस. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक प्रोब यूज किया हेपेटाइटिस C के पेशेंट वगैरह, बाद में आप उसको जस्ट रिंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं विजिबली तो कोई ब्लड नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डे का एंड है, मजीद इंस्ट्रूमेंट्स अभी नहीं है, मैं बस ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ. तो ये सारी चीजें जो आप रीजनिंग अपने माइंड में करते हैं, दैट्स नॉट इनफ. और वी नीड टू हैव ये लाइक स्ट्रिक्ट नो है कि आप नहीं यूज कर सकते सेम इंस्ट्रूमेंट विदाउट ऑटोक्लेव किए. Then we have sharp injuries to staff. Common scenario है accidentally you poke yourself or staff by recapping a needle, या आप sharp instrument during cleaning cut कर लेते हैं finger को, scalpel slip हो जाती है. So if a sharp is contaminated with patient's blood, तो direct route of transmission है ये. Hepatitis B जो है वो bigger threat है here, almost like there's a 30% chance कि अगर patient जो है उसको hepatitis B था और आपके साथ उसका जो है हुआ है एक्सपोज हुए हैं, तो देयर अ चांस कि आपको भी हो सकता है. विद हेपेटाइटिस C वो 1 in 3 हो जाता है, रिस्क थोड़ा कम है. एंड HIV में रिस्क और थोड़ा कम है, दैट इज लाइक 0.3. सो आई एम जस्ट लाइक गिविंग दिस कंपैरिजन कि आप देखें कि जो हेपेटाइटिस B है उससे ज्यादा जो है चांसेस हैं. तो और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी है. तो जो रूट्स हैं, हम जो मेथड्स हैं खत्म करने के, अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, हम वैक्सीन भी लगवाएं, हम अपना इन्फेक्शन कंट्रोल भी करें, तो जो एक मेजर 30% रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है, हम उसको बहुत कम कर लेंगे. Then we have transmission risk, cross-contamination via surfaces and hands. So basically, this is just a picture. इसमें ये दिखा है कि like if you आप कोई procedure कर रहे हैं, आपने gloved hand है, glove के ऊपर तो blood लगता ही है, और आपने उससे अपना फोन यूज किया है या पेन यूज किया है या कुछ भी यूज किया है, बाद में आप भूल जाते हैं कि भाई मैंने ड्यूरिंग प्रोसीजर एक कॉल अटेंड की थी ग्लव वाले हैंड्स के साथ, और अगर आप वही बाद में क्लीन हैंड लगाएं, कोई और बंदा उसको हाथ लगाए, तो उस बंदे को भी जो है ट्रांसमिशन जो है वैसे डायरेक्टली तो नहीं होगी, लेकिन अगर वुंड है कोई उसके हाथ पे और वो ब्लड जो है वहां से ट्रांसफर होता है, तो देयर इज अ रिस्क. So that's why there should be this concept of clean zone and dirty zones in the clinic. तो जो चीजें clean zone की हैं वो clean ही रहनी चाहिए. जो dirty zone वाली, जो आपस में mix नहीं होना चाहिए. Like gloved hand के बाद आप पेन नहीं पकड़ सकते, आप फोन नहीं पकड़ सकते, आप लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं यूज कर सकते. अगर आपने उनको यूज करना है तो you should have proper barriers on them. और जो है और या फिर आप ग्लव उतार के यूज करें. Okay, this was just an article जो कि majorly इसमें से मैंने स्लाइड बनाई थी, तो आई एम जस्ट शोइंग कि भाई पाकिस्तान की रिसर्च है कि जिसमें जैसे कि डेंटिस्ट्री जो है पॉसिबल रूट हेपेटाइटिस C की ट्रांसमिशन का इन पाकिस्तान. तो एज अ डेंटिस्ट इज लाइक इट्स अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कि हम पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने आए हैं, हम उसको मजीद गिफ्ट दे के ना भेजें.
नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास होने चाहिए डेंटल सेटिंग्स में. मैं गेटिंग सम मैसेजेस. इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल जैसे मेड से पहले जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हैं ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बता दी कि हमारे पास क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो कि होनी चाहिए. हमने हर पेशेंट के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं. डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको जस्ट वन टाइम यूज़ करना है. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए. हैंड हाइजीन अच्छी होनी चाहिए. इवन इफ आप ग्लव यूज़ कर रहे हैं, ग्लव यूज़ करने के बाद भी आपने किसी या तो आप हैंड वॉश करें या फिर आप जो है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से अपने हैंड क्लीन करें. बिकॉज ग्लव्स भी फुल प्रूफ तो नहीं होते. यू नेवर नो कि ग्लव के अंदर कब जो है छोटा सा टीयर आ गया है. तो लाइक मेक इट अ प्रैक्टिस. हर पेशेंट के बाद ग्लव्स तो चेंज करने ही है. ग्लव्स चेंज करने के बाद आपने ग्लव चेंज कर नए ग्लव पहनने से पहले आपने हाथ भी लाजमी धोने हैं. या वॉश कर लें या उनको हैंड सैनिटाइज कर लें. सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हम शुरू से हमें पढ़ाया जाता है. हमने नीडल जो है उसको बंद करना है, उसको स्कूप करना है, उसको रिकैप प्रॉपरली करना है या कोशिश करें रिकैप करें ही ना, डायरेक्ट नीडल यूज करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए. डिस्पोजेबल वर्सेस रीयूजेबल आइटम्स, तो वी शुड ऑलवेज यूज लाइक जितना पॉसिबल है डिस्पोजेबल यूज करें कंपेयर टू रीयूजेबल आइटम्स. बिकॉज रीयूजेबल में फिर भी देयर अ चांस के प्रॉपरली ऑटोक्लेव नहीं हुए या समथिंग. बट डिस्पोजेबल चूंकि हम यूज ही वन टाइम करेंगे तो that is a good practice. Then instrumentalization and clinic hygiene. Instrumentalization and clinic hygiene में सबसे पहले वही we know that कि sterilize करें all instruments using an autoclave. indicator strips use करें ताकि confirm भी करें कि जो हमने autoclave किया है was it working, कोई मसला तो नहीं था autoclave में. disinfect करें chairs को, trays को, handles को after every patient and use disposable covers or barriers for hard to clean items. And vaccination and occupational safety. All dental staff they must receive HPV vaccine. इसकी हमारे पास 3 डोजेज होती हैं. 3 डोजेज लेने के बाद आपने टेस्ट भी करवाना है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडी टाइटर कितना है. एंड इट शुड बी less than 10. अगर less than 10 नहीं है तो then you need a booster dose. HCV की वैक्सीन कोई नहीं है, so that उसके लिए फिर we need strict infection control that is really critical. We need to maintain exposure protocols, wash wounds, start PEP क्या है, दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. कि वी शुड नो कि अगर अब एक्सपोजर हो गया, पहले तो ये है कि आपने कोशिश करनी है एक्सपोजर हो ही ना. उसके लिए यू नीड टू हैव स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. जैसे कि नीडल है, अगर उसको किस तरह से हैंडल करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है. लेकिन फिर भी ऑब्वियसली मिसहैप्स हैपन. तो फिर अगर एक्सपोजर हो गया है तो उसके बाद क्या करना है अगली स्लाइड में बताती हूँ. So we should have these protocols in place. We should conduct periodic screening and health checks. Okay, so post-exposure prophylaxis may immediately clean the wound with soap or water. Flush mucosal splashes with water. अगर आपको पता है कि जो source patient है वो कौन है तो arrange करें testing HPV के लिए, C के लिए and HIV के लिए. Majorly इन्हीं तीनों चीजों के लिए हम करते हैं because these are bloodborne. एक्सपोज पर्सन जो बंदा एक्सपोज हुआ है अगर डेंटिस्ट हुई है तो ही शुड गेट देयर बेसलाइन टेस्ट और फिर फॉलो अप टेस्ट करें पर मेडिकल गाइडेंस. HBV के लिए अगर एक्सपोज पर्सन या डॉक्टर अगर वो अनवैक्सीनेटेड है या वो अनश्योर है देन दे शुड गेट HBIG दैट इज हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड स्टार्ट द वैक्सीन सीरीज एज सून एज पॉसिबल विद प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स. और अगर वो वैक्सीनेटेड हैं और उनका लास्ट उन्होंने एंटीबॉडी टाइटर जो करवाया था दैट वाज लाइक लेस देन 10 सो दे डोंट नीड टू बी उनको फिर कोई मसला नहीं है. For HCV, there is no post-exposure prophylaxis, but early monitoring and new antiviral treatments can cure infection if it is caught. Prompt action is essential. Then what if the doctor has the hepatitis? अब हम as a doctor हमें भी हो सकती है तो तब आपके लिए क्या जो है precautions हैं. So dental staff member who has chronic HBV or HCV, they can usually continue to work but should consult with medical and dental board guidelines. Typically, अगर dentist is HBV E antigen positive, basically E antigen जो है वो हमें बताती है कि हमारा viral load कितना है. अगर हमारा viral load 200 से ज़्यादा है, then we can't perform a procedure. Especially जो exposure prone procedures होते हैं वो हम नहीं कर सकते. लेकिन with treatment
वायरल लोड कम होता जाता है, तो जब वायरल लोड 200 से कम हो जाएगा देन वी कैन गो एंड लाइक तब हम कर सकते हैं। तो अगर तो डेंटिस्ट जो है उसका ईबीवी ई एंटीजन पॉजिटिव है, वायरल लोड बहुत ज्यादा है, इफेक्टिवली ट्रीट नहीं हुआ, तो फिर उनको एडवाइस करेंगे कि एक्सपोजर प्रोन प्रोटोकॉल्स ना करें या फिर इम्प्लीमेंट करें डबल ग्लविंग, ताकि कोई भी चांस ना हो ट्रांसमिटिंग टू पेशेंट्स। डबल ग्लविंग इज फॉर द डेंटिस्ट देमसेल्फ, ताकि उनसे पेशेंट बच सके। लाइक अगर डेंटिस्ट को कोई जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई प्रिक होता है और कुछ ब्लीडिंग होती है, तो डबल ग्लव वुड लाइक थोड़ा सा प्रिवेंशन का हो जाएगा कि डायरेक्टली पेशेंट का ब्लड से एक्सपोजर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट प्रोटेक्टिंग डेंटिस्ट, दिस इज पेशेंट को डेंटिस्ट से प्रोटेक्शन किस तरह मिले। और मॉडर्न एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हैं एचबीवी एचसीवी के, और पॉजिटिव अगर पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैं तो आफ्टर द ट्रीटमेंट उनका लो या अनडिटेक्टेबल वायरल लोड हो जाता है। नॉनदलेस दे शुड स्टिल बी जो है एक्स्ट्रा कॉशियस। एंड वट इफ द पेशेंट हैज हेपेटाइटिस, पेशेंट टेल्स यू देमसेल्फ कि भाई मुझे हेपेटाइटिस है, तो क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होंगी आपके ख्याल में? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू एंड आई वुड वेट फॉर योर आंसर्स। So anyone who is interested in giving the answer to this question, they can answer it in the chat box. Okay, चलो मैं खुद बताती हूँ। बेसिकली दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। देयर आर नो स्पेसिफिक और स्पेशल प्रिकॉशंस जो कि हमने लेनी है, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट एवरी पेशेंट कि वो एज अ पोटेंशियल एचबीवी का पेशेंट है। आपने सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी है, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। पेशेंट एचबीवी का है तो हम उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे या इम्प्लांट नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने जो आपकी यूनिवर्सल, आपकी हर पेशेंट के लिए जो प्रिकॉशंस हैं, वो आपने स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है वही फॉलो करनी है। और एचबीवी और एचसीवी वाले पेशेंट्स के लिए और इवन एचआईवी वालों के लिए भी एग्जैक्टली सेम प्रिकॉशंस फॉलो होंगी। ठीक है, हमें पता है कि जब कोरोना आया था, कोरोना वाज अ रेस्पिरेटरी वायरस, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रिकॉशंस थी, एरोसोल्स वाले प्रोसीजर्स हम अवॉइड कर रहे थे एंड ऑल। लेकिन एचबीवी, एचसीवी, एचआईवी ये ब्लड बोर्न है, रेस्पिरेटरी नहीं है। इनके लिए वी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। हमने ऑटोक्लेव करने हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो हमने सबके लिए करने हैं। डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे के लिए नहीं यूज करना, सबके लिए करना, सबके लिए ऐसे ही है। हमने अपनी जो स्क्रीन जो एक्स्ट्रा लाइक वो जैसे पेन नहीं यूज करना ग्लव्ड हैंड के साथ, तो सबके लिए ऐसा है। तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं है। अगर एक पेशेंट विद नॉन एचपीवी आपके पास आता है, वायरल लोड हाई है, लो है, इट डज नॉट मैटर। What are the common gaps in our Pakistani clinics? तो basically unsafe practices बहुत ज़्यादा हैं, syringe reuse, poor sterilization, ये थोड़ा सा है हमारा issue and we need to work on that. Low HPV vaccination rates among dentists and assistants, so we need to make sure कि जो dentists and assistants हैं वो HPV vaccine लगवाएं. It's not that expensive. आप फर्स्ट डोज लगवाते हैं, देन 6 मंथ्स के बाद सेकेंड, एंड देन 1 ईयर के बाद थर्ड, और इवन इसकी जो है दूसरी डोज 2-3 इसके डिफरेंट वैक्सीन के भी होते हैं। आप 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स के बाद भी लगवा सकते हैं, बट उसके बाद आपको 12 मंथ्स के बाद एक बूस्टर लेना पड़ता है। फिर लैक ऑफ ऑटोक्लेव और इंडिकेटर्स इन सम क्लिनिक, तो ऑटोक्लेव ही कुछ क्लिनिक्स में हमारे पास स्पेशली क्वैक 3 बहुत ज्यादा है, तो अगर ऑटोक्लेव नहीं है तो यू कांट प्रैक्टिस। आप डेंटल क्लिनिक बना ही नहीं सकते अगर आपके पास ऑटोक्लेव नहीं। फिर मिसकंसेप्शन है अबाउट ट्रांसमिशन रूट्स। मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा ये हैं, आई रिमेम्बर हमारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी बड़ा मिसकंसेप्शन था कि ओके पेशेंट ने अगर बता दिया है कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो वी वुड बी लाइक ओके अब क्या करना है ये वो। तो देयर इज नो स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने उनको एक्स्ट्रा अलग से ट्रीट नहीं करना। वी जस्ट हैव we just have to know कि ट्रांसमिशन रूट ब्लड है, तो जस्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। Improper waste handling and PPE non-compliance.
That is also a major gap. So summary क्या है हमारे पास HA और जो E था fecal route है dental risk बहुत कम है B के अंदर blood borne है high risk है dental clinic में survive करता है surfaces पे HCV blood borne है common है पाकिस्तान में कोई vaccine नहीं है so we have to rely on infection control. Then HDV है it requires HPV तो जो HPV के risk हैं prevention है वही HDV के हैं and everything can be prevented all of the hepatitis A B C D E they can be prevented via universal precautions and proper sterilization. These were, in conclusion, hepatitis transmission in dental setting is preventable. Strict adherence to infection control is vital. HPV vaccination is really important. And every clinic must take responsibility to protect patient and staff. These were my references for this presentation. And thank you. Thank you so much, Dr. Neha, for the insightful and informative session. Your clear explanation of the risk of hepatitis transmission in dental practice and the importance of infection control has truly added great value to our summit. So we have a few questions for you that I'd like you to answer. The first one is from Dr. Saman. Sure. Is it necessary to use different instruments for Hep patients or different protocols? No, as I told you, there is no different protocols. वही सारे instruments आप normal patients के लिए use कर रहे हैं, वही आपने use करने हैं. Just make sure कि they're properly autoclaved. That's it. Autoclave जो है, it can kill the Hep B and C virus. कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम B और C के patients के लिए अलग से instruments रखें और वही उन पर use करें. जो हमारे universal precautions है, they are enough. Okay. But So we have another to one make is sure कि apply भी करें. all right. So another question is from Dr. Kuratalan Ali. She asked if we are discarding the needles without recapping, won't it affect others? And she also asked, what about the drum autoclave? ओके सो डिस्कार्डिंग के लिए हमारे पास जो नीडल डिस्कार्डर होता है उसके अंदर सिर्फ नीडल आप डायरेक्ट जो नीडल को रखते हैं और वो नीडल ब्रेक हो जाती है ऊपर से आपका बाकी आप उतार लेते हैं सिरिंज को नीडल उसके अंदर ब्रेक हो जाती है सारा जो नीडल्स हैं वो सारी उसके अंदर कलेक्ट होती हैं सो हम ये तो नहीं कर रहे कि कोई और बंदा उन नीडल्स के साथ एक्सपोज हो रहा है ठीक है सो दैट्स द करेक्ट मेथड जो नीडल ब्रेक होती है आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट बट उसके लिए वो हम यूज करते हैं जो डायरेक्ट डिस्कार्ड होता है हम उसको अपने नॉर्मल वेस्ट के अंदर नहीं भेज रहे डायरेक्टली नीडल्स हमेशा सेपरेट वेस्ट में जाती हैं All right. She also asked about what about drum autoclave? I'm sorry, I don't have any information about drum autoclave. वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ड्रम ऑटोक्लेव का क्या टेम्परेचर है और वो क्या जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट मतलब अगर वो ड्रम ऑटोक्लेव जो नॉर्मल हमारे पास अगर डेंटिस्ट्री के लिए सेफ है तो ठीक है यूज इट आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट Oh, that's all right. Mehak asked, are there any specific material or instruments we should avoid or prefer when treating these patients? नो नथिंग कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो हमने अवॉइड करने हैं या यूज करने हैं स्पेशली फॉर हेप बी और हेप सी पेशेंट्स आई थिंक it was a question it used to be हमारे फाइनल ईयर में क्वेश्चन भी होता था ये एक इम्पोर्टेंट होता था कि ये क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी है कि नहीं तो ये ट्रिक क्वेश्चन होता था कि भाई नहीं करनी कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं चाहिए So there's another question from Dr. Amy. Any more information regarding vaccines that are available in Punjab for Hep B and their name? आप किसी भी जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं तो they would guide you कि कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था when I was in University of Health Sciences I think 2 years पहले तब वो सब डॉक्टर्स को फ्री में भी लगा रहे थे so you can just go and ask them और I don't think so कि वो इतनी एक्सपेंसिव हैं जस्ट 3 डोजेस लगनी है उसके बाद आप 1 to 2 years के बाद बस एक चेकअप करवा लें कि लाइक द एंटीबॉडी टाइटर इज इनफ नॉट बट वो भी आपको सिर्फ एक दफा करवाने की जरूरत है Okay. Thank you so much, Dr. Neha, for this wonderful session. We appreciate the time, effort, and expertise you brought to this important discussion. On behalf of Pride and everyone attending, thank you once again for valuable contribution. Thank you so much. It was truly an honor to be a part of this session and to host you.
Thank you so much, Hira, and thank you so much, everyone, for listening. Thank you. Dear audience, kindly fill the feedback form provided in the chat box regarding today's virtual summit. Thank you. The success of this virtual summit is the result of the unwavering dedication, vision, and collaborative efforts of our esteemed organizing team, comprising experienced educationists, enthusiastic researchers, and committed professionals. The team worked tirelessly behind the scenes to curate a meaningful and impactful event. From conceptualizing to execution, each member played a vital role in ensuring the smooth conduct of the virtual summit, reflecting their shared passion for advancing dental education and research. We extend our heartfelt appreciation to the entire team for their hard work. We are especially honored to be joined by esteemed and highly accomplished guest speakers from across Pakistan who have graciously taken the time to be with us today. On behalf of Pride, I extend my heartfelt gratitude to each of you. Your presence and contributions are deeply valued and appreciated. As we draw this insightful symposium to a close, I would like to take a moment to reflect on the meaningful discussions, exchange of knowledge, and shared enthusiasm that mark today's event. We have had the privilege of hearing from distinguished speakers, engaging in thought provoking sessions, and exploring new perspectives that will undoubtedly contribute to the advancement of our field. Your active participation and presence made this virtual summit not just successful but truly inspiring. On behalf of the entire organizing team, I extend our deepest gratitude to our honorable speakers, our guests, and every individual who contributed to making this event a memorable one. As we wrap up the session for today, I want to sincerely thank each one of you for being a part of this enriching and inspiring day. The energy, engagement, and insightful conversations we have witnessed reflect the true spirit of collaboration and the shared commitment to advancing our field. The take home message is clear: hepatitis is preventable, detectable, and treatable, but only if we stay informed, proactive, and committed to early intervention and public education. As healthcare professionals and advocates, it is our collective responsibility to integrate awareness, prevention, and patient centered care into both medical and dental practices. Together, let us continue to raise our voices, share knowledge, and work towards a healthier, hepatitis free future. Thank you everyone for the active participation, and inshallah, see you all again very soon. Thank you. Allah Hafiz.